तो नमस्कार देवी और सज्जनों। लास्ट वीक की लाइव स्ट्रीम एकदम से रोकने के बाद इस वीक हम फिर से अपने मोबाइल फ़ोन को लेके वापस आ गए हैं, जिसके थ्रू हम अपनी खुद की लाइव स्ट्रीम को देखेंगे और हमारे जो बडीज हैं, जो हमारे डिस्कॉर्ड बडीज हैं, उनके साथ इसको शेयर करेंगे हमारी लाइव स्ट्रीम को कि भाई लाइव स्ट्रीम कैसी है। लाइक लाइक लाइव स्ट्रीम कैसी है ये तो नहीं करेंगे शेयर, लेकिन लाइक उन लोगों से बात करने के लिए, जैसे कि दे नो दैट आज हम उपलब्ध है। तो गाइस अभी के लिए स्लो मोड ऑफ है, जैसे ही ऑडियंस अगर थोड़ी बहुत बढ़ती है तो बी विल गेट स्टार्टेड विद द स्लो मोड। अरे कनेक्टिंग एरर ब्रो, हेलो ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। नोप्स वन इज बेस्ट, हेलो ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। भाई सिर्फ मेरी जो डिस्कॉर्ड वाले भाई लोग हैं उन लोगों के साथ मैं सिर्फ लिंक शेयर कर दूं, उसके बाद आप लोगों के पास आके मैं बात करता हूँ दोबारा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट एवरीवन, प्लीज ज्वाइन इन द लाइव स्ट्रीम। तो भाई भाई जो लोग भी लास्ट लाइव स्ट्रीम लास्ट वीक वाली लाइव स्ट्रीम का पार्ट थे, तो उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ कि लाइक सडनली लाइव स्ट्रीम बंद हो गई लास्ट वीक, और उसका मेन रीज़न ये था कि देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हैवी रेन इन माय एरिया। तो आई थॉट कि भाई अगर अब भाई लाइव स्ट्रीम भाई, क्योंकि दिक्कत ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो मैं काला काला दिख रहा, मेरे वाईफाई में कुछ इशू हो गया था, तो उस वजह से मैंने सोचा कि चलो भाई लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रही है, 11 PM हो गए, तो लेट्स कंटिन्यू कि भाई अब नहीं करते हैं लाइव स्ट्रीम, नेक्स्ट वीक कर लेंगे। क्योंकि भाई मैं भी लेट करता तो भाई मुझे लाइक 1 घंटे 1.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम में मज़ा नहीं आता, 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम बढ़िया से हो, आप लोग भी देखो, हम लोग भी देखें, हम भी बात कर पाएँ आपसे। भाई एलोरिंग पे काजू, हेलो ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड कनेक्टिंग एरर। भाई कहाँ रहते हो भाई? मैं एमपी की, लाइक एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है नरसिंहपुर, उसमें एक मतलब एक छोटा सा नहीं, थोड़ा थोड़ा मीडियम साइज़ का शहर है, लाइक मेरी डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए, उसका नाम है घाटरवाड़ा। तो भाई वहाँ रहते हैं हम, और वहीं से सीधा प्रसारण कर रहे हैं आप सभी के लिए भाई कनेक्टिंग एरर भाई। तो कैमरामैन शुभम के साथ इंजीनियर जो, नहीं, कैमरामैन शुभम के साथ शुभम, इंजीनियर जोन ऐसे ही बोलते हैं ना आज तक, वैसे इंजीनियर जोन क्योंकि चैनल का नाम है, तो भाई इंजीनियर जोन। तो भाई आज हम लोग शुरुआत करेंगे स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड के साथ, एंड आई हैव कंप्लीटेड द लाइक आई एम डन विद इट एलोरिंग पेगास ब्रो। आई वाज जस्ट अबाउट टू से इट that I just completed it like in the afternoon around like 4 or 5 p.m. I just completed that game. Like my campaign, the completion percentage around 65% is like the campaign completion percentage is 65 or 66%. It was a good game. The story was quite good. I really loved the game. The stories are quite good, and I'm like really impressed with how like actually how Sony like makes story driven single player games. क्या बात कर रहे हो ब्रो? मैं भी रहा था, सही बताओ भाई, कनेक्ट है यार, अरे भाई क्या बात है भाई। हाँ भाई एक्सटेंशन ब्रो, क्योंकि मैंने उसको लाइक एक्सक्लूसिव स्टोर से लिया था, तो भाई मिल गया था बैकपैक भाई फ्री में। लाइक इवन तो इट इज़ नॉट वेरी लाइक बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का नहीं है, लेकिन ऑनलाइन 24-2500 रुपीज़ में मिल रहा है, तो आई गॉट अ डिसेंट क्वालिटी बैकपैक। हाँ भाई कनेक्टिंग एरर भाई, मतलब रहे ओ भाई कनेक्टिंग एरर यार, अरे लव यू टू भाई, भाई मेरे भाई। आप कहाँ से हो भाई? ये तो नहीं कि कोई गाड़ी वाला भाई हो भाई, आप जानते हो मुझे, पहले तो मेरे मजे ले रहे हो कि भाई, अरे मैं भी रहा था भाई, अरे मैं तो वही रहा था। अच्छा, आप जहाँ रहते हो ना आपके घर के जैसे बाजू वही रहा था भाई, ऐसी बातें तो नहीं करोगे ना थोड़ी देर बाद? अभी कहाँ रह रहे हो भाई कनेक्टिंग एरर भाई? हम एमएसआई आफ्टर बनना चालू कर लेते हैं। एंड गाइस इस गेम के बारे में एक बात बताऊंगा अभी आप लोगों को, जस्ट लेट मी गेट स्टार्टेड विद द गेम। तो भाई एमएसआई आफ्टर बनना स्टार्ट होने वाला है, बस एक सेकंड का समय लगेगा। चलो भाई, नहीं अभी कहाँ हो आप? यस जी गाली ब्रो, यार अभी तक नहीं दिया कीबोर्ड। अरे भाई यस भाई, बहुत बहुत सॉरी भाई, थोड़ा सा भाई मैं बिजी हो गया था काम में। आप आज रुक जाओ, आज दे देंगे आपको लिंक, आज रात तक दे देंगे, नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगा। तो गाइस इस गेम के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ भाई, कि जैसे अगर हम स्विंगिंग मोड में हैं इन अ गेम, लाइक भाई जैसे कि ये जो गेम है, जो हम गेम खेल रहे हैं, इसका नाम है क्या, स्पाइडरमैन रीमास्टर। तो भाई 1440p पे है, DLSS क्वालिटी पे है, ग्राफिक्स हमारे वेरी हाई पे सेट है। तो भाई ये गेम भाई सीरियसली बताऊँ, मेरा FPS काउंटर ऑन नहीं था, एंड आई नेवर फेल्ट कि भाई मेरा गेम भाई 60 FPS से नीचे जा रहा है कभी भी। आई कंप्लीटेड DLC कंप्लीट नहीं किया भाई, मैं अभी दिखाता हूँ क्या क्या कंप्लीट किया मैंने एलोरिंग पेगासस।
Elden Ring पे काश I will just show you what I have completed till now. श्योनी आप तो पास में ही हो भाई, श्योनी में कभी गया नहीं हो लेकिन पास में ही, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है भाई नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से. सो गाइज लाइक अगर मैं अनेबल करता हूँ, लाइक इफ आई अनेबल द DLSS, so what happens is that like my GPU doesn't get fully utilized. Even you can see that my GPU is getting utilized around 86 or 87%. Okay. But like there are some issues with this game, especially with swinging, and I really don't know like whether the DLSS implementation was not that great. Let's go. Like there was a FPS drop right there, as you can see. It might be not bad, huh? I should have gone into advertising. improved DLSS. Yeah, but like the DLSS, like I seriously don't think that DLSS is working that great, especially when we are like swinging across the city. Like even now, my GPU and getting like usage and getting like maximized. Like it should be around 99% as it is in most of the games. भाई मेरा ऑटो अपडेट पे है भाई, तो भाई इट शुड हैव बीन फिक्स्ड. और भाई मैं और देख लूंगा भाई, क्योंकि गेम स्टार्ट नहीं होता. अगर कोई पैच आया होता तो गेम वुड हैव बीन स्टार्टेड टिल नाउ. ओ भाई गाइस जस्ट वेट फॉर अ मिनट भाई, थोड़ा सा टाइम देना. मैं पिटाई लगा रहा हूँ भाई, ऐसी जगह फंस गया हूँ जहाँ पे कि अगर भाई मारूंगा नहीं तो मैं भी निपट जाऊंगा भाई गेम में. तो 1 मिनट का समय दो भाई. तो 1 मिनट का समय दीजिए. आई विल रिप्लाई बैक टू ईच वन ऑफ यू. जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस प्लीज. I don't want to sing a song for you all because I'm not great at singing. I seriously loved this game, but like seriously, it was really good. Like Merald bro, it is totally fine. Like it's not a PC man. It's a laptop, and they are supposed to run that hot. And like and this year I can guarantee you that every laptop, no matter which laptop you are talking about, be it Predator, be it like Lenovo Legion, be it Acer Predator, this year every laptop GPU is touching around 80 degrees because of like how power hungry the CPUs are. Okay, हो गए ना ब्रो. बारमैन मीन भाई बर्मान. हाँ बर्मान गया हूँ भाई, मैं बारमैन पढ़ रहा था भाई. 1 मिनट अगर मैं रिप्लाई ना दे पाऊँ ना तो थोड़ा सा भाई मतलब वेट करना, क्योंकि अभी एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ भाई, गेम पे फोकस कर रहा हूँ थोड़ा. कि मैं आई रियली डोंट वांट टू डाई इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, और वो भी इन चिंदी लोगों से. कोई बड़ा विलन होता तो भाई मर भी जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो जस्ट गिव मी अ मिनट भाई. जैसे ही ये एरिया हमारा भाई आज़ाद होता है उसके बाद आपके कमेंटों का अच्छे से आंसर दिया जाएगा. The gadgets are just too good. भाई के धनाई लगा दे भाई. Merald bro, just give me a minute. I will reply back. Anshuman bro, thank you so much for joining in, man. Like it's been a long, like you joined the live stream like very rarely, and hopefully I will be able to reply back to you. Just give me 2 minutes. Let me clear this area. But it always feels great to see you on the live stream, man. Like, it always makes me smile whenever I see your name or like people who have been with the channel from the very starting. And I just saw like your post, that thread ceremony post. Like many congratulations to your brother and to your family. I think genuine संस्कार ना भाई thread ceremony में वो ही हुआ ना भाई, क्योंकि मेरे उसमें नहीं होता भाई. like हम लोग हमारे परिवार में नहीं होता genuine संस्कार.
दैट्स आई एम नॉट अवेयर कि भाई थ्रेड सेरेमनी लाइक जनेऊ संस्कार ही है या कुछ और है. Very high settings with DLSS set to just 1 more minute, guys. I'm just done with this area. Okay, he's gonna die. I'm so sorry, guys, that I am not able to reply back to you all. Like, एक तीर से 3 से कहा. देखो भाई, आज आपको हम एज अ स्पाइडरमैन पिटाई लगाना सिखाते हैं भाई लोग. हाउ टू हैंडल द बिग बुलीज. तो भाई बिग बुलीज की पिटाई लगाते हैं एंड देन बी आई विल रिप्लाई बैक टू ऑल. चलो भाई, I think okay, yes, Persian camp have been like we have gotten over it. Like right now you can see like our CPU is charging 40 watt and the CPU temperature 95 degrees. So I think it's totally fine if my CPU is running like that, because 40 watt is a lot of power if my CPU is consuming at the same time. So we have completed this thing and now we will speak in English and try to answer the question. Jordan Nunes, bro, thank you so much for joining in, man. And I will definitely try to speak in English. Like if there are some people who want me to answer in Hindi, then I will try to answer in Hindi. And Jordan, man, like the 95 degree temperature, like the CPU temperature 95 degree, mainly because like the turbo boost has like CPU is using the turbo boost and the power is around like 40 watts. So it is totally normal for a CPU to like run over 40 like 90 degrees if they are consuming over like 40 watts of power. And the second and the reason that can affect the CPU temperature is that like right now my room temperature should be around 30 degrees because it haven't been raining in my area since last 2 or 3 days. So it's quite hot and humid in my area and there is no way that I can control my room temperatures here in India. So that's why like sometimes the temperatures might seem a bit overboard. So if you have like a room where your room temperature is around 20 degree, you might expect a better temperature around 87 to 80 degree, 85 to 87 degrees. Yeah, like Axion, bro, like there are some problems with this game. Like I'm not saying that it is perfectly optimized game, but this game runs definitely much well enough. Like if you don't like turn on the FPS counter, you might like I personally have completed the game without turning on the FPS counter, and personally I never felt this game was running below 60 FPS. And Anshuman, bro, thank you so much for joining in. Like I'm just gonna say it again. Thank you so much for joining in, brother. भाई सब बता देंगे. यस भाई, आज सब बता देंगे. अरे अंशुल भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. अंशुल भाई, भाई डीएलएस का भाई लाइक ऑटो अपग्रेड हुआ होगा भाई एलोरिंग पेगासो ब्रो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट पैच. Damn thanks. I'm also I play on low settings on same laptop. Mirad bro, like the temperature, like if you are playing on low settings, even then the temperature will be like that because the CPU will try to both CPU and GPU will try to maximize their power to make your run game as well as they can. Shobhadeep Patra, bro, I will just show you the settings. I'm behind. I'm a bit behind on the chat mainly because I'm trying to answer the queries that were answered before. DLSS quality 1440p and very high settings. Big Bull से याद आया. Big Bull that yeah man, like even I got to know that. Rakesh Junjunwala and Rook who's here. Murkemur brother, like thank you so much for joining in. Namaste भाई साहब. Murkemur भाई नमस्ते. बहुत बहुत स्वागत है. Like you are always welcome here man. Like it's so good to see you here. Murkemur bro. और ब्रदर एक्स्ट्रा लार्ज गेमिंग पे. हाँ भाई मैं बताता हूँ भाई आपकी लाइव स्ट्रीम से भाई. थैंक यू सो मच. यस भाई, nice to see you. Can I get Acer Predator for like no way man, no way bro. You are asking for an insane discount and I really don't think that like
it might happen. I'm not saying that it's never gonna happen, but it is something that is extremely rare that they're gonna give a discount of around 23k. Insensible. Like personally speaking, like my temperatures have been quite like just like they are right now, mainly because whenever my CPU get utilized a bit more, the CPU temperatures go around 90 to 95 degrees. But if like if the GPU goes get utilized on 133 or 140 134 watts, the CPU remains around 19 watts, the temperature of the CPU remains around 80 degrees, and the GPU runs around like 83 or 84 degrees. It's quite normal, bro. But like considering like if you are playing a CPU intensive game like right now, like as I'm playing right now, like if I just disable the DLSS, you will see that there are like really high, like extremely high chances that this thing is gonna go up. Let's turn on some ray tracing as well, okay? And let's see what's gonna happen. Okay, now you will see the CPU temperature is gonna go really like a lot more down because the CPU won't be using that much power. Lucas Larbit, bro, you know there ain't any issue like seriously, this GPU can play this game with ray tracing on without any issue. The thing is that the VRAM usage get maximized, and right now you can see I was playing at very high settings at 1440p. The VRAM usage was around, if you might have seen, like it was around 5.4 GB. Right now it's 5 GB. It's mainly because my VRAM is getting maximized. Even I have heard that there are some like VRAM issues, like VRAM leak issues as well. So like there are definitely something that need to be fixed in this game, especially when we are swinging through from one place to another place. You will see like there is so much fluctuation in GPU power and GPU utilization. Like right now GPU utilization is like going from 80% to 100%. So like that's the thing. Like these are game issues and these are not like laptop issues. And the other thing is that like since RTX 3060 just have like 6 GB of VRAM, like there will always be issues running a game at 1440p with ray tracing without DLSS. And even without ray tracing, like this game looks good. Yeah, Exxon man, you are quite right, bro. बार हेल्प चाहिए, मैंने RTX 30 और PC PUBG तो उसमें PUBG का मैंने पेज आके आज तक अटक जाता है, आगे नहीं जा भाई। सीरियसली बताऊँ भाई, ऐसे तो भाई मैंने पहली बार इशू सुना हो, यस ब्रो। बट लाइक मैं जो एक चीज़ मैं रिकमेंड कर सकता हूँ वो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई आप एक काम करो कि भाई आप भाई यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, लाइक यू शुड सर्च द इशू ऑन द यूट्यूब, होपफुली इट माइट हेल्प यू आउट. So like you can see, you hopefully you guys can see like you just saw now, like it went from 66 watt to 132 watt and 132 watt to 160 watt. Mannar Jadon, bro, at 1.60 lakh, just go for Acer Predator Helios 300. The laptop's link is of course in the description if you want to buy it from my link. If you don't want to buy it from my link, if you don't want to help the channel, it's not an issue, but I will seriously recommend you to go for Acer Predator Helios 300 with 12700H and RTX 3060 140 watts. It's one of the best PC that you can get. One of the best laptop that you can get. All units, reports of fugitives raiding emergency food supplies. Incident was reported. Ban full utilization is this. Should I read? Like alluring, bro, like until and unless it reaches 86 degree and you begin to see that the either the like the core clock speed goes to down below, it starts to go down below 1600 megahertz or like 1500 megahertz. You don't need to repaste the thermal paste, but if you want you can definitely do it. Like there is no harm in changing the thermal paste. So you guys can just see like it is much more playable, but it is not that smooth gameplay experience. बो का डिस्ट्रॉय, ब्रो भाई गाली क्यों देते हो भाई, क्या गलती कर दिया मैंने? एंड गाइस प्लीज 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 देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू से कि भाई आप सभी लोग अगर लाइक whoever have joined the live stream recently, please make sure that you are hitting that like button so that this live stream can reach many more people. So if you have just joined the live stream, please hit that like button, and if you're new to the channel, please consider subscribing the channel as well after watching the content of the channel. So guys, let's see, there is one more building जिसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है.
हाँ भाई देखो जतिन ब्रो, देखो आप भाई फ्री में डाउनलोड कर रहे हो या फिर आपने गेम बाय किया हुआ है, पहले तो ये बताओ मुझे भाई आप। देखो अगर फ्री में डाउनलोड कर रहे हो भाई तो फिर तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी थोड़ी सी भाई, ठीक है। क्योंकि भाई देखो कोई चीज़ अगर अपन को फ्री में चाहिए तो भाई फिर उसके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर आपने भाई बाय किया हुआ है गेम को, या आई कंप्लीटेड अ गेम एक्जॉन भाई। भाई अभी ना भाई एक ही इशू जो मुझे देखने को मिला है अभी तक, वो ये है कि लाइक इफ आई एम रनिंग द गेम लाइक CPU intensive games, like right now you can see my CPU is get like if the CPU is using more than 40 watts of power, the like the temperature would be around 95 degrees. But in most of the games when I'm playing at 1440p, the CPU doesn't get the turbo boost, and it is the GPU that always get the turbo boost and runs around 133 or 134 watts. Like this game have some issues as well, optimization issues as well. So it is one of the reasons why that I'm like the CPU temperatures are a bit higher in this game. But like overall, if you are playing a CPU intensive game, a GPU intensive game, your CPU temperature will mostly be Rico Barman, I downloaded it on the day when I was live streaming, but I was not able to like live stream that day because there was no electricity in my area. So that was one of the issue. From that day, I didn't got enough time to record the video. So like just for you, I downloaded that game, and I will definitely Love it. I will definitely just try to play it in front of you. Just give me 2 minutes. After this game, we will play it. So Jatin bro, if you are playing it for like downloading for free, you have to compromise on something. Then like downloading a game like as fast as you can is one of those issues. But yeah, भाई 1440p पे stream हो रही है भाई. भाई bro, I got an भाई like you got an amazing deal, Sanjay Devraj bro. Many congratulations to you bro, and hopefully you will have an amazing time with that laptop bro. देव सिंह भाई परफॉर्मेंस में तो काफ़ी डिफरेंस है भाई। अगर आप 1080p पे कंपेयर करोगे तो भाई 20 to 25% परफॉर्मेंस डिफरेंस है, क्योंकि 95 वॉट भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है जो 1080p पे। लेकिन जैसे ही हम 1440p पे आते हैं ना ब्रो, तो परफॉर्मेंस डिफरेंस बहुत ज़्यादा बाइट हो जाता है, अराउंड लाइक 35 to 40%। क्यों? मेनली रीजन उसका क्या है कि जो 95 वॉट जो पावर है ना RTX 36 वो मैक्सिमाइज हो जाती है। Bro, Dev Singh, bro, I downloaded this game from Steam, bro. I bought it on Steam. I pre-ordered it on Steam. I will tell you. What you will tell him, bro. Everyone knows. Ninja Gamer, hello, bro. Thank you so much for joining. Rico Barman, bro, you don't need to say that to me, bro. I'm here to help you all out, and it's like it's always pleasing for me to help you out one way or the other. And if there are some demands from you guys, like it, I'm quite I'm more than happy to like to complete them as soon as I can. Ninja Gamer bro like says 95 bot doesn't have a mux switch as well. You might expect around like on very high settings, because like, currently I'm playing the same FPS that I'm getting at 1440 man. Like around 70 FPS on very high settings, but DLSS set to quality. Ninja Gamer bro. 20th गेम पे हाँ भाई एक्सियन भाई लिखो ब्रो बीइंग अ यूट्यूबर and like and understanding that there will be many more future updates for this game which will definitely fix the performance issues of this game. I had to buy this game. So bhai like it's not about money bhai, example sometime, because it's not like that I'm just gonna make one video on this game and then I'm never gonna play this game ever, because I will definitely make multiple videos. There are multiple laptops that I might have to review this game on if there comes an opportunity, if I have the other laptop. So in that case, if I get it for free, it becomes extremely difficult for me to install it, download it again and again and do all these things. भाई अभी तक तो कभी नहीं हुआ भाई जितन भाई। भाई 86 अभी इसलिए जा रहा था, देखो भाई मैं बताऊं भाई, क्योंकि मेरा रूम टेम्परेचर बहुत हाई है भाई इस समय जतिन भाई, और 86 भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई गेम उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। और भाई 86 भाई नॉर्मली भाई 86 पे भी थर्मल थ्रॉटल नहीं करता, आप लोग देख सकते हो उसको भाई। इट्स नॉट हार्मफुल भाई, ज्यादा मत सोचो भाई उसके बारे में। देव सिंह ब्रो, आई वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग इट फ्रॉम एपिक बट आई बॉट इट फ्रॉम स्टीम। Like you are quite true bro, they did a game great job, even though I won't say that this is a perfect like an amazingly optimized game that most people like stating it to be, but it is definitely
one of those game, like one of the best Spider-Man game that anyone can play, and then they have released it on PC. So there is nothing more than we can ask as an end user. क्या मैं एक्सपीरियंस भाई से पबजी स्टॉक भाई हो सकता है, यस भाई, देयर इट कैन बी अ वेरी बिग इशू भाई. देखो around FPS with ray tracing on Ninja Gamer, bro, Control, what's the situation? because VRAM was getting maximized. VRAM का जो यूसेज था वो मैक्सिमाइज हो रहा था, उस वजह से इट like the performance was not that great. And I'm live streaming at the same time as well, bro, at 1440p, so you have to understand that as well. जतिन भाई देखो, बेयर आई से थर्मल थ्रॉटलिंग क्या होती है, सीरियसली बताऊं भाई जतिन भाई. थर्मल थ्रॉटलिंग का भाई अपन लोगों ने भाई जो एक भाई डेफिनेशन देकर रखा ना, वो गलत डेफिनेशन रखा. थर्मल थ्रॉटलिंग का मतलब होता है भाई, जो रियल थर्मल थ्रॉटलिंग होती है वो ये होती है कि जब आपका जो भाई, जैसे आप गेम खेल रहे हो एंड सडनली भाई जो CPU GPU का यूटिलाइजेशन हाफ हो जाए, या फिर FPS एकदम से भाई, जैसे आपको 60 FPS मिल रहा है तो आपके FPS 30 हो जाए, 20 हो जाए या 10 हो जाए, एकदम से इतना ज़्यादा डिप करे, तो उसको बोलते हैं भाई थर्मल थ्रॉटलिंग. थोड़ा बहुत थर्मल थ्रॉटलिंग हर लैपटॉप में चलता है, क्योंकि भाई विद टाइम योर थर्मल पेस्ट गोना डिग्रेड, टेम्परेचर्स गोना गो अप इन योर एरिया, इन योर रूम टेम्परेचर्स गोना गो अप. तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, इस वजह से FPS ऊपर नीचे हो सकता है. अरे भाई डेल G15 की बात कर रहा था भाई, अगर 86 पे है तो भाई देखो, मैंने डेल G15 का भाई देखो, उसका भी मैं ये बोलूंगा, अगर उसमें भाई FPS लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, और उसमें अगर आपका भाई जो क्लॉक स्पीड है, जो आप कोर क्लॉक स्पीड देख रहे हो, C क्लॉक, वो अगर 1500 मेगाहर्ट्ज के नीचे नहीं जा रही, तो इट्स टोटली फाइन. Oh, Gaurav man, many congratulations to you, brother. Where did you bought it from, like, and what was the deal that you got, man? स्ट्रीम करोगे तब भी चलेगा, और 1440 में खेल भाई. अभी ना भाई वो मैं कर सकता हूँ, बट लाइक ब्रो, लाइक सिंस लाइक इट्स मच इजियर फॉर मी टू डू अ लाइव स्ट्रीम एट 1440p, आई एम अब डूइंग अब अ लाइव स्ट्रीम ऑन 1440p. भाई सागनिक पटनायक ब्रो, नो ब्रो, even 1 terabyte is extremely less if you are someone like me who have multiple games stored on their PC. Dev Singh bro, definitely 6800H, because the RTX 3060 that you're gonna get is 140 baud. There is a mux switch, so definitely I will seriously recommend you to go with the 6800H if you can go, but it totally depends on the GPU that you're going for as well. भाई Uncharted भी खेलेंगे भाई, लेकिन रिलीज होने दो. I very high, देखो बामिन bro, very high plus DLSS set to quality. भाई देखो प्रबोध खाड़े ब्रो, भाई देखो डैश F15 की आप बात कर रहे हो, इट्स नॉट अ बैड लैपटॉप, इट्स अ ग्रेट लैपटॉप, बट you have to understand that it's not a gaming laptop, it's a thin and light laptop. So if you're going for it, just go for it, considering that it's you will be using it for like productivity task and not just for gaming. भाई मस्त है भाई, अभी ना भाई सीरियसली बता रहा हूँ, मस्त है भाई. इवन भाई अभी मैं कुछ गेम्स खेल के दिखाऊंगा, इवन ऑन हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स द गेम रन pretty bad, and I never feel like, oh my god, getting a 2K display with RTX 3060 is just a bit too much. Like it's perfectly fine. भाई आप भेज के देख लो यस भाई, अगर भाई मैं सर्च करके देखूंगा और भाई मुझे मिलेगा आंसर, तो भाई मैं डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करूंगा भाई. FPS लॉसिंग हो रहा है जतिन भाई, डोंट वरी अबाउट इट, just like remove the software that you are using to measure the FPS, and you will be quite happy. And World of Dreams bro, thank you so much for your but bye, thank you so much for joining. And how are you, brother? Which is better? Like it totally depends on you, Mohit bro. If you're talking about better battery life and better productivity tasks, like better productivity performance and like quite similar performance to in gaming, then A15 is better. If you want like the raw power, if you are mainly focused on CPU power, then F15 is the way to go. I just told you the setting, Rico bro. Acer Nitro 5, don't go for Aspire 5. Aspire is not a gaming laptop. You should definitely go for Nitro 5. Nitro 5 is much better than Acer Aspire 7, and definitely for coding both laptops are good. With whatever offer is going on, like that's great man. Many congratulations to you, Gaurav bhai. लीक्स के बारे में तो पूछ रहा था ब्रो, कोई लीक्स आए अभी तो कोई नहीं आया भाई. इवन आई सीरियसली थिंक दैट दे गोना रिलीज स्पाइडरमैन माइल्स मोरल्स फर्स्ट, एंड देन दे गोना रिलीज द अनचार्टेड. आई थिंक इट्स गोना रिलीज इन 2022 फॉर श्योर. भाई F15 नहीं है भाई, आई एम सो सॉरी भाई. वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स भाई बिल्कुल अब और दूसरा गेम खेलते हैं भाई.
भाई बस मुझे एक चीज़ देख लेने दो, मैं कहीं पे मैंने लाइक कुछ लगाया हुआ तो नहीं था। ओके भाई चलो ठीक है, ये वाला एरिया भी हमारा कवर हो गया है। सो बी जस्ट गोना, आई एम जस्ट गोना क्लोज दिस गेम एंड बी गोना प्ले सम वॉर जोन फॉर आवर रिको बामिन ब्रो। सो ह्यूज shout out to my brother Rico Bamin, who is also a member of our channel and who have been waiting to see the War Zones gameplay on the channel for a while. I think it's been almost a week. So it's my humble duty to fulfill his demand and to help him out in whatever way I can. Yeah. So it is applying updates right now. So just give me a minute, Rico bro. It might take like 1 or 2 more minutes. It is downloading around like 250 MB more. So just give me 1 more minute. भाई वैलोरेंट भी पड़ा है भाई, आई थिंक वैलोरेंट भी पड़ा है भाई। अभी ना भाई वैलोरेंट भी खेलेंगे आज आप, वैलोरेंट भी इंस्टॉल कर लिया भाई। टेक एंड थम ब्रो, हाँ जतिन भाई, टेक एंड थम ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन मैन। ब्रो आपने इंजीनियरिंग किया? हाँ भाई मैंने बिल्कुल इंजीनियरिंग किया हुआ है भाई, यस भाई। जतिन भाई हाँ भाई मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ, सॉरी भाई मैंने यस बोल दिया। ब्रो सह सी हल्क देखा? अभी नहीं देखा भाई, टाइम नहीं मिल पाया भाई, मैं जरूर देखूंगा भाई। भाई अनरेबल जी ब्रो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ब्रो। भाई थोड़े से टेम्परेचर हाई जाएंगे डेल G15 के भाई, तो टेंशन मत लेना। इट इज गुड इनफ लैपटॉप, बट भाई मेरे हिसाब से थर्मली उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। सी हल्क नहीं देखा भाई, कोई गेम सजेशन? एग्जाम ब्रो भाई, हाँ भाई स्पाइडरमैन खेलो, आई एम जस्ट लविंग स्पाइडरमैन। और भाई डाइंग लाइट का भी स्टोरी मोड आने वाला है, तो भाई किसी के पास डाइंग लाइट हो, डाइंग लाइट टू खेलो। गेम कैप्चर यूज कर रहा हूँ अभी ना भाई, जन गेम में गेम कैप्चर यूज होता नहीं, तो फिर डिस्प्ले कैप्चर यूज करना पड़ता है मुझे। विंडो कैप्चर से उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है भाई, आई डोंट नो व्हाई। यार विंडो ही कैप्चर करता हूँ, मुझे नहीं पता अभी, मैं देख लूंगा अभी बता दूंगा। विंडो कैप्चर शायद नहीं करता मैं। तो भाई जस्ट लेट द वॉर जोन स्टार्ट बिकॉज इट्स गोना शट डाउन वन मोर टाइम। भाई मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू भाई जबजीत भाई। और भाई बजट भाई लाइक सीरियसली इट्स नॉट अ इशू भाई, 1650 वाला रीजन 5 इज गुड। एंड भाई भाई देखो जितना बजट हो, आप जिस भी बजट में ले रहे हो, अगर आप अच्छी चॉइस कर रहे हो तो इवन इट विल लास्ट लाइक फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो भाई यू मेड वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस बाय गोइंग विद रीजन 5 एंड विद GTX 1650 यू विल बी रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। भाई डाइंग लाइट 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड, स्पाइडरमैन चल रहा है। इसके सिवा मैंने कोई गेम नहीं खेल हुए भाई एक्जन भाई, मैं खुद मैं सही बता रहा हूँ। मैं डाइंग लाइट 2 के बाद बस यही गेम मैंने कंप्लीट किया, मैंने गेम ही कंप्लीट नहीं किया बीच में, तो मैं खुद नहीं बता सकता हूँ भाई कौन सा गेम खेलूँ। 4GB, हाँ भाई टैग भाई आप तो भाई मतलब बहुत पुराने समय में रह रहे हो भाई। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद वॉर जोन। अभी ना भाई 1080p में क्या हो रहा है, मैं सीरियस बताऊं, क्योंकि मैं 1440p पे गेम कर रहा हूँ, तो भाई उसमें और ज़्यादा लाइक जीपी यूटिलाइजेशन और ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइक उसको भाई फिर से जो रेजोल्यूशन है उसको चेंज करके 1080p में स्ट्रीम करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं 1440p पे क्या लाइक परफेक्टली स्ट्रीम हो रहा है, तो भाई मैं ज़्यादा छेड़छाड़ ही नहीं करना चाह रहा था उसके साथ। 20 लैपटॉप इट बी टफ hands down bro, parallel bro, it will easily beat F22 F15 2022 bro, for sure, you are quite right about it bro। चला जाता है इसी रूम में एक्जन भाई, थर्मल फिर तो रीपेस्टिंग कराओ आपने शायद गैले कुछ बोला था आपने भाई, मैं पढ़ नहीं पाया था यार भाई, थोड़ा सा आप फिर से कमेंट करो भाई, कौन सा आप थर्मल पेस्ट, आई थिंक गैलेक वाला कर रहे हो ना आप भाई, यूज करो भाई, चेंज देखो चेक करके देखो। कई बार क्या होता है कि भाई अगर अच्छा नहीं चल रहा है लैपटॉप, तो वी नीड टू भाई डू सम थिंग्स कि भाई लेट्स सी व्हाट थिंग्स गोना फिट इन एंड व्हाट थिंग्स गोना हेल्प अस गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ अवर लैपटॉप। वो करो भाई। जॉनसन जॉनसन भाई जॉनसन जॉनसन भाई के तो खिसक लिया भाई। So guys, just one humble request, guys. 34 people are watching our live stream, so thank you so much for that. Guys, just hit that like button so that this live stream can reach many more people. If you can do that, it will be really great for the live stream and for me as well, guys. So if you have just joined the live stream, guys, please make sure
to hit that like button. And Saurabdeep Sen, bro, thank you so much for joining in, man. How are you, bhai, Meri? Nitesh Joshi, bro, thank you so much for joining in, brother. And guys, I will just use by their end an option for, okay. So there is that option for Warzone. Hopefully it's gonna get displayed on the screen. What? Even I don't know X1 भाई भाई क्या था भाई जॉनसन भाई का क्या था पता नहीं भाई कौन सी समस्या थी उनको जिनको इस तरीके के शब्दों का उपयोग करना पड़ा. And I think, like, let me try once more. I think I might have to use display capture with this game because it can't be displayed on the live stream. So guys, just wait for a minute. I will just use the display capture so you guys can see the game, but there will definitely be some major FPS drop, mainly because I'm using display capture and it is much more like heavy on, like, you just saw my stats. It is much more heavy on my, like, mainly the CPU. So guys, we just gonna play some Call of Duty Modern Warfare for our brother Rico Bombin. चलो भाई GTA 5 नहीं पढ़ा है भाई यार मेरे पास, बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है भाई वो. चार्ट फ्री मिलेगा क्या भाई? MC निंजा जैक ब्रो अभी तक तो भाई आया ही नहीं है, लेकिन जब रिलीज होगा डेफिनेटली इट विल बी अवेलेबल फॉर फ्री. Pralaya Basnet bro, definitely it can, but definitely going, but like mainly because like if you want to turn on the ray tracing, I think going with RTX 3060 3070 makes a lot more sense. So guys, we are playing at full screen 1440p, and I don't know like why this game is stuttering a bit. I really don't know, like I've been playing this game for after a long time. It might be something related to like DLSS set to quality, motion blur disabled, most of the things are enabled. It might be a game issue, or it might be something else. So guys, we just gonna play like Golden Plunder. Let's play some Plunder. Caldera. Okay, like Rico bro, because like mainly because I get a lot of ping. Let's see which game it's gonna select. I think it will be like, because I'm playing Plunder, it will most probably be Caldera. But like I will be losing around 25 to 30 FPS, mainly because I'm using a display capture, Rico bro. So keep that in mind. QE bro, like seriously, I don't know much about Great Britain pricing, so I can't comment on that. I'm extremely sorry bro. Good night Gaurav bro, thank you so much for joining in. भाई it's quite like good enough सौरभदीप भाई, लेकिन अगर आपके में Windows 10 है तो don't upgrade to Windows 11. I ain't gonna recommend that. Ox Dad B bro, like yes, the temperatures, like if I'm playing a CPU intensive game like a Warzone, definitely the temperatures will be a lot higher. So guys, currently DLSS is set to quality, but definitely there will be some FPS startups, mainly because I'm using a display capture. Same time grab. Purgatory TB. I think it might take me a lot of time to enable that, and hence I'm not gonna enable it. I'm extremely sorry for that, man, because I usually like display all these stats. So like I don't know, like, so I am having a packet loss issue as well, guys. So you have to bear with me because my Wi-Fi is not that great. I'm using a local company's Wi-Fi, so there is some packet loss as well. So you have to bear with me. Yeah, Rico Bamin bro, I always use GeForce experience, like in order to upgrade my Nvidia GPU drivers. Yeah, I think bro, Rico Bamin bro, like it already detected the highest possible setting. I will try to recheck it again. भाई स्ट्रीम पे भाई है वो आ जाएगा भाई, स्ट्राइक आ जाएगा. क्या मतलब है निंजा जैक भाई? It is like parallel bro, like seriously speaking bro, like I'm getting
like a bit higher temperature, mainly because I'm sitting in a room which might have temperature like ambient temperature around 32 degrees. So you have to like keep that in mind as well, bro. Avina, bro, it's one of the best deal that you can get, but definitely I seriously don't know like what is happening with the game. Okay, the FPS is quite fine now. Like seriously, I don't know like what is happening with the game. I'm playing it after a very long time, and I seriously don't know like why FPS is going so much up and down. तो भाई अभी ना भाई बहुत शानदार लैपटॉप, बस इतना याद रखना कि उसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं एमएसआई की, वो मेट्रो सिटीज़ और टायर 1 सिटीज़ में काफ़ी अच्छी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट द आफ्टर सर्विसेज ऑफ एमएसआई इज नॉट दैट ग्रेट इन अदर कंट्रीज. तो भाई देखो ऐसे ही मारे जाएंगे. सिंगल प्लेयर पे कम नहीं, सिंगल प्लेयर पे कम एफपीएस नहीं मिलते भाई, सेटिंग्स भाई खेलते हैं भाई हम. और भाई देखो गेम के ऑप्टिमाइजेशन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है भाई. मैं फिर बनने वाला हूँ भाई डिस्प्ले कैप्चर लाइक seriously I have seen this thing, like this is one of the major issues with a display capture that oh shit I was just setting ducks. Coach Gaming, hello bro, thank you so much for joining in. भाई निंजा जैक भाई आपका रैप सॉन्ग है भाई, आप बताओ मुझे, मैं डेफिनेटली सुन लूंगा, लेकिन भाई लाइव स्ट्रीम पे I won't be trying to like Rico Bowman bro, like I think like it will be much better for you to see the like if it would have been game capture, I think the performance would have been a lot better, because like particularly because when like I'm using a display capture, it like the CPU usage just gets like boosts up a lot more. So because of that sometimes the FPS will like fluctuate a lot, so that is one of the issues. भाई कोलैब कर लेंगे भाई, नहीं हो जाएगा भाई, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन भाई कुछ देखो कोलैब अपन जब कर पाएंगे भाई, जब अपन लोगों को कुछ कंटेंट मिलता होगा भाई, ठीक है. हाँ लेकिन इट्स नॉट लाइक भाई मुझे भाई आपका कंटेंट भाई मुझे आपके सब्सक्राइबर मिले कुछ नहीं, आई विल डेफिनेटली लव टू हेल्प यू ऑल, बट लेकिन भाई मेरी ऑडियंस अगर उस टाइप का कंटेंट देखते हो तो डेफिनेटली आई वुड हैव डन दैट, बट आई वुड लव टू डू अ कोलैब विद यू. अभी ना भाई आई एम यूजिंग अ डिस्प्ले कैप्चर, तो भाई यही हो रहा है भाई, सेटिंग्स ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं अभी इस गेम के बाद, because भाई डिस्प्ले कैप्चर के साथ भाई देयर इज अ इशू, लाइक आई हैव सेड दिस टाइम एंड अगेन, because it is because I'm not using like two system, like two PC. Ah bhai, and I'm also having a packet loss. You can see on the left hand side, just under the frame time, you can see that there is some like packet loss as well. So overall there are some issues. Rico Bowman bro, like I ain't gonna say that there will be a huge difference, but I will try to set that display to 1G80p, even though you guys might see it a lot more smaller than on your screens as well, but I will definitely try to do it for you, man. But like it like seriously speaking brother, like I have played this game like before as well, like I haven't played it in the last 2-3 weeks or a month, but like the performance that I'm getting, like definitely I don't get performance like that. It is mainly because I have to do the display capture, and this game being already being a CPU heavy game, since I'm using display capture, the CPU gets much more utilized. कैप्चर मत भाई, डिस्प्ले कैप्चर नहीं करेंगे तो फिर वो गेम नहीं देख पाएगा भाई, दिक्कत ये चल रही है ना. कोई है भाई, जब मैं मरने वाला हूँ, और उसका पैकेट लॉस भाई, जो भाई मतलब स्थिति वैसे ही खराब है, पैकेट लॉस और पैकेट लॉस तो बिल्कुल ही बैंड बजाय दे रहा है भाई, जो बची कुची का सर है भाई. चलो कुछ तो किल्स मिल रहे हैं, लेकिन like idea bit gaming is a good deal bro, Charan bro. If you wanna go for it, if you have seen the review, that it's a good enough deal. Apart from that, there is Asus TUF A15 that you can go, but definitely there will be the temperatures, both the CPU and the GPU temperatures will be a lot higher than the idea bit gaming, that I can say for sure. But the build quality is far superior than idea bit gaming as well. That is I'm quite sure about as well. Shit.
like I think like there are multiple reasons by my FPS is fluctuating so much in this game mainly. One thing is that I'm getting the packet loss, if you guys can see. I don't know, like on the left hand corner you can say that my there is a high ping issue. Shit, I'm gonna die. Recording under 60k. Shantanu bro, if you can check my description out, you will see there are some recommendations that I have given. For you, I might definitely recommend you to go for with Acer Nitro 5 with GTX 1650 and 11000 11400H CPU. It will be a really good combination for you for under 60k. Abhinav bro, yeah, by CPU temperature will be like that if my CPU wattage will be around 40 watts. And it be like but to be really frank with you guys, like in Warzone, my CPU temperature will for sure remain around 90 to 95 watts no matter what I do. Because it's a CPU intensive game, my CPU gets pushed to its limit in terms of power consumption, and like for me it's totally fine to have these kind of temperatures when my CPU is trying to push the limits for me in terms of performance. Shantanu bro, क्या भाई इन आसूस भाई अगर आसूस के भाई मैं ये सर रिकमेंड कर रहा हूँ भाई, अगर आसूस में जाना है तो भाई आसूस का भी आई थिंक 60k के अंडर तो भाई कोई मुझे इतना पसंद नहीं आया आसूस में. आई थिंक आसूस का जो बेस्ट लैपटॉप भाई, अगर आपको लैपटॉप चाहिए भाई अगर लाइक अच्छे तो भाई 70-75k तक जाओ, फिर टफ में ही मिलेंगे, स्टार्टिंग वही होगी भाई. ऑडियो भाई क्या हो रहा है पटेल भाई, कुछ दिक्कत चल रही है क्या ऑडियो में भाई मेरी? लाइक रुको मैं लाइक you are whatever you have just said is just quite true. Even I have experienced that, but the thing is that man, like even if I will be using a display capture for that game, definitely there will be some issues. And I will tell you one thing, the display capture issue is mainly because of the MSI afterburner, like the overlay that I'm using to measure the FPS. It is mainly because of that. Shit, I just died. भाई प्रणाम निकांडे ब्रो, अगर भाई 1 लाख तक लैपटॉप लेना है तो Asus TUF A15 5900HX and RTX 3060 is the best laptop. Okay, I will just switch to 1080p. No issues, brother. So this will be 1080p. And game straight away starts to look much blurry. FPS seems much more consistent, but I can't say like it will remain like that. And guys, please don't spam like because because I haven't enabled creator smart bro. Please don't spam mate. ना सही है. Okay भाई चलो ठीक है भाई. I don't have it installed on my system, Rahul bro. Bro, isn't it? 16 smooth video editing. Creator smart bro, definitely it's a good choice. I think you're talking about the 79 or 80k model that even I am recommending under 80k, the best laptops under 80k. So like, definitely it's a good enough laptop if you want to go for it. The FPS is like much more stable when I'm playing at 1080p, mainly because CPU is using much less power. Oh bhai, one shot down. But definitely by display capture, it definitely making the matters worse, and I'm having like that packet drop issue as well. Like it's not very bad bro, it's visible, but like the clarity that I was getting with 1440p was much better than what I'm like seeing right now. एचडी वाला ब्रो आपको बजट पे डिपेंड करता है भाई. अगर आपका बजट है डेफिनेटली दिस लैपटॉप ब्रो जो 6800H वाला है. मेरे पास तो 1440p वाला मॉडल है भाई. आप 1080p वाले की बात कर रहे हो तो आप 1080p वाला ले लो भाई. तो डेफिनेटली इट्स अ मच बेटर डील मेनली बिकॉज इट हैव 140 watt RTX 3060 and 6800H inside it. No issues, creators smart bro. Rico Bobbin bro, like definitely if you are a competitive player, I think like it won't be an issue for you to play the game because
I like please do remember that I have DLSS enabled as well, quality set to quality as well. So you have to understand that as well, that it might be making the picture quality a bit more little bit more worse, but definitely like the picture quality is not as beautiful as it was on 1440p. I'm saying, bro, I won't recommend Flow X13. It's an experimental model, and I seriously don't know how good the support will be in the long run. And like, it's basically a tablet that you are getting. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Okay, let's do that as well, man. I'm just doing this for all this for you. So I will try to do everything that you want me to do and test it out. But man, like, try to wait for the video. Like if you are on Discord, I might try to do a live stream for of this game for you on Discord as well, man. Let's set it to performance. Enemy dropping into the AO. Shit, I'm gonna die. And guys, please don't spam. You have, yeah, I have a Discord, Rico, I have a Discord for a very long time. This laptop is much better than the 5900HX and RTX 3060 XD wala, bro. तो प्लीज वो 70k के अंदर ब्रो आई थिंक भाई यमन ब्रो प्लीज मेरा डिस्कॉर्ड भाई मेरा डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, उसमें मैंने लैपटॉप कुछ मेंशन किया हो, उनमें से आप लैपटॉप देखो जो भी पसंद आ रहा है, उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो डेफिनेटली पूछो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट मैन. आई हैव ऑलरेडी गिवन माय recommendations in my description, like which laptop you can get for a particular price range, and like if you have any questions regarding that, I will definitely try to help you out and would love to help you out. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy soldier nearby. Shit. There was a stutter. Did you saw the stutter now? Like it is much better than 1080p, that I can say for sure. 1440p Priyadarshan bro, and I'm using display capture, so I'm losing around 25 to 30 FPS on an average. Best laptop under 1 lakh, at under 1 lakh, I think Asus TUF A15 2020 with 5900HX and RTX 3060. With Asus TUF A15 with 5900HX and RTX 3060 is the best laptop that one can get at that price range for sure. Let's go. Enemy dropping into the AO. Someone is shooting at me. And guys, I might miss out on some comments mainly because I have to focus on game just a bit as well. Okay, I don't want to be a sitting duck like whom anyone can kill. I love to get some kills. I got 5 kills, so that's Enemy dropping into the AO. great for me at least. Hostile dropping into the area. Watch the skies. By the quiet kid, I seriously don't think that I will be able to do the benchmarks on Legion 5 2022, mainly because like right now no company is sending me the laptops. I have to buy them through my own money, and I have already spent a fair bit of money, my savings in buying this laptop. So until and unless I have enough money from my savings, like, and that will at least take like 5 to 6 more months, I won't be spending. Shit, am I gonna die? Five to 6 more months. I ain't gonna buy any more laptops for sure. Like definitely there is Rico, bro, but definitely I think playing with DLSS performance and 1440p is much better to DLSS quality and 1080p on a 1440p display at least. Can we get 1440? Priyadarshan bro, like in which game, bro? Hostile dropping into the area. If you're talking about
if you're talking about Warzone, I think it will be extremely tough to reach that mark. But 120 FPS should is something that is something that you should keep an eye on. Both are good. Drux, Serio, bro. Both Intel and AMD are good for coding. With that call, no issues, bro. Rico Bauman, bro. Alright, the information from you, but thank you so much for that, Rico, bro. Hopefully, like my only motive of for being on YouTube is that I really want to help you guys, and if I can do it. But whatever I can do, there is nothing more pleasing for me to do than that. Oh, bhai, I'm gonna die. I'm gonna die. कैसा काफी लोग उसको भाई मेट्रोइड से बेटर है भाई लैब केयर बेनर प्रो लो भाई यस जी ब्रो यस ब्रो इवन आई हैव रिकमेंडेड इट इन माय रीसेंट पोस्ट अमितेश ऐसा बैटरी लाइफ वॉन्ट बी गुड इन टर्म्स ऑफ फॉर राइजन थैंक यू मानस तो मानस ब्रो हियर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन मानस भाई so Manas bro will definitely help you all a lot. He is one of those guys who always try to help out the people who are asking the questions. Even if I miss out on some comments, he always try to answer you all. So if you have some comments, please do fire them up, because Manas bro here, if I'm not able to read your comments, if I'm missing out on your comments, definitely Manas bro will try to help you out with to the best of his knowledge. I died. अरे शुभम भाई ओचिया गेमिंग बाइटी भाई बहुत समय बाद कैसे हो भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन शुभम भाई I always use a cooling pad mainly it's not mainly because to like get better temperature, mainly because in order to because all the laptops have bottom fans, so in order to so that my laptop can use those bottom vents, I used to do that. I think it might look because bro, I might try to lower down some settings as well. The 1440p have that clarity. There the things look much more clear on a 1440p display, especially if you are playing at 1440p. 1080p just seems like a bit blurry on a 1440p screen. Oh my god, there is a lot of money. There was a lot of money. I just picked that whole everything up. स्क्रीन का डिफरेंस होता है भाई जारवेस भाई काफी क्वेश्चन ये था हाँ भाई स्क्रीन का डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है भाई एक आध डिग्री थर्मल्स का डिफरेंस मान लो क्योंकि भाई काफी लोगों ने मुझे बताया है कि भाई काफी लोग बोले मुझसे इवन भाई जितना मैंने सर्च किया था उसके हिसाब से तो भाई थर्मल्स में डिफरेंस नहीं होता अरे भाई तारीफ के योग्य हो भाई मानस भाई आप लेट टर्न डाउन सम सेटिंग्स फॉर अवर ब्रदर रिको ब्रो so on demand texture let's set them to let the texture be high, particle quality be low, tessellation be near. Okay, let's disable the ray tracing first. Let's set this to high, normal, dynamic. Let's see what's gonna happen now. I'm just not gonna set it to lowest, but I will just drop some of the settings off, and hopefully that I'm losing a lot of FPS. Like seriously, Rico bro, I'm losing a lot of FPS mainly because I'm using a display capture, brother. Like seriously, the performance would have been a lot more better, a lot more consistent. अरे thank you so much, Shubham भाई. It's so good to see you here भाई. काफी समय बाद और कैसे चल रहे हैं भाई दिन? पुणे में मेरे भाई कैसे चल रहे हैं दिन? क्या हो रहा है पुणे में और कब आ रहा है भाई गाड़ा वाला साइड? बेस्ट और नॉट बेबी भाई कौन सी कॉन्फ़िगरेशन भाई पूरा तो बताओ भाई उसके बाद मैं बता पाऊंगा भाई या आई हैड रे ट्रेसिंग ऑन बट इवन basically ray tracing doesn't make that much of a difference, but definitely it was affecting the performance a bit at least, but I can't say anything much anything more than that I'm losing a lot of FPS mainly because of
display capture, and I literally can't do anything about it because I have to literally restart my lab. Today, could you please tell me by FPS is not? Arjit Datta bro भाई, like a lot of people have been facing that issue. तो अर्जित भाई उसका रीजन ये है कि गेम उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, मेनली अगर आप स्विंग कर रहे हो भाई, ठीक है। और दूसरा आप एक चीज़ और देखोगे, आपका जो CPU भाई, जो GPU का यूसेज परसेंटेज है वो 75-80% पे चला जाता है, पहली चीज़ जब आप स्विंग करते हो। दूसरी चीज़, जब आप भाई यूज़ करते हो तो आपका वॉटेज ही बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जो आपका CPU का GPU का मैक्सिमम वॉटेज है। तो वो रीज़न है भाई। भाई देखो, गेमिंग के लिए तो मैकबुक प्रो काम का नहीं है भाई। प्रियदर्शन भाई आप जाओ भाई एसर प्रेडेटर हेलियोस 300 2022 के साथ 12700H और RTX 3060 बहुत मस्त लैपटॉप है, 1.54 लाख में मिल जाएगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बेस्ट लैपटॉप अंडर ओवर 1.25 लाख की कैटेगरी में। तो इफ यू वांट टू चेक इट आउट, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अरे भाई देखो 2 वीक से लॉन्ग वीकेंड चल रहा है शुभम भाई। अमित ब्रो बजट बताओ भाई। So true, the quiet man, so true. Like around 20 to 25 FPS or X double bro. Mainly because like it might be 15 FPS as well, or 10 FPS as well in certain scenarios. But I am definitely losing around 20 FPS from what I have seen. Mainly because I'm using a display capture to like run this game. Yeah, I died. बस इसके बाद बैलेंट खेलेंगे भाई। अमितेश भाई भाई देखो, अगर अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए और भाई सिमुलेशन खेलना है, देखो सिमुलेशन के लिए भाई मेनली भाई इंटेल के सीपीयूज आर मच बेटर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं। तो भाई अगर आप भाई इंटेल के साथ जाओगे तो बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलेगा। तो भाई आप भाई दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपको ओवरऑल बैलेंस चाहिए तो आई थिंक भाई आपको भाई एक AMD के CPU के साथ जाना चाहिए, जो आपको बेटर बैटरी बैकअप दे। क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस में ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का फर्क है, बट डेफिनेटली देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन Ryzen laptop and Intel laptop, especially if you are talking something about like simulation gaming. भाई इसके बाद बस 2 मिनट भाई, बस 2 मिनट के बाद रिको ब्रो होपफुली ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। Bajaj Gaming भाई seriously bro, like I seriously don't have any knowledge about it, so I ain't gonna say much. You should try searching it, like searching about it on like what do we say on YouTube. And bro, like Bajaj bro, just try to go into a settings and try to see like is it 100% or not. If it is not 100%, try to set it to 100%. I think you might get better FPS. Yeah, Rico bro, like I can definitely do that for you bro. Just ping me on Discord mate. I can even do a live stream for you on Discord brother. It will be much easier for me to like explain certain things to you when I'm playing it just for you. You can ask me all the questions. Hey Rico bro, thank you so much for helping out bro. भाई 80K के अंदर भाई अनुराग भाई सीरियसली बताओ, एसर नाइट्रो 12500H RTX 3050 वाला जो लैपटॉप आया है 7980K में, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप दैट यू कैन गेट। बट उसमें सिर्फ 8GB की सिंगल चैनल DDR4 रैम है, तो उसमें 3000 रुपये की DDR4 की एक और स्टिक लगानी पड़ेगी, जब ही वो लैपटॉप कुछ काम का, नहीं तो इट विल नॉट बी दैट यूजफुल, क्योंकि उसमें FPS काफ़ी कम मिलेगा। यस, दैट्स अ लॉट ऑफ रैम यूजेस लुइस बेलगोइस प्रो। Yeah, like Prakar bro, even the, like since it have a 8-core processor, it is a great choice as well. But definitely like if you're going for Acer Nitro 5, it might overall be just a slightly better, what do we say? Slightly better choice. The placing bro, like quite true, the quiet kid bro. So guys, I'm just gonna close this game. I'm just gonna play. हाँ भाई, तो वालो ले लो भाई, वाला भाई, वो वाला क्या है भाई के अंदर भाई। धनेश्वर 1.5 लाख के अंदर नहीं है, देखो या तो 1.5 लाख बजट है तो आई विल से कि
आप extend your budget to 1.54 lakhs and go for Acer Predator Helios 300. The link is in the description. भाई link check कर लो. The best laptops over 125k. So that is the best laptop that I'm gonna recommend. Like at that price range. So guys, I'm just gonna play some Valorant. I'm just gonna remove this display capture that you were seeing here. Just give me some time. Like let me do one thing, okay? So I think I have made a mistake. I have been recommending people in a wrong manner. So I should just put the laptops in the opposite order, you know. I should put the best laptops under 125k first. Then I should put best laptops under 125k. And then it should go like that, because I think most of the people are asking me about the best laptops under 1 lakh, 1.25 lakhs, and I'm not able to help them out because they haven't been able to get the best choices, mainly because my choices are starting from 50 or 60k. So guys, you can check my description out. Like I'm just making some changes to it. And guys, till then, what you can do to like help my channel a lot and help me personally a lot is that just make sure, guys, if you have just joined the live stream, or if you have been a part of the live stream for a while, and if you haven't hit that like button, so guys, please make sure that you are hitting that like button so that this live stream can reach many more people. And like guys, like the other thing that I'm gonna say is, like, if you like, just check my other content out as well uh before like making a decision of subscribing to the channel. So if you guys like my content like even a bit, I would seriously recommend you to subscribe to my channel as well. If you haven't checked my other content out, you should definitely check it out as well before making a decision whether you should subscribe to my channel or not. And I'm playing Valorant. I mean, question, bro. Just give me a minute. I was just making some changes to my description, guys. And even there are some links for the best cooling pad that I personally consider. So if you go, guys, want to see like which cooling pads I want to recommend to you guys, you can definitely check them out in the description as well. So guys, like that will be it. I am just gonna save it out. Thank you. कैसा रहेगा प्राइस रेंज? भाई विक्टस मत लो भाई, अनुराग राय ब्रो, भाई सही बता रहा हूँ, विक्टस की जो बिल्ड क्वालिटी है भाई, वो बहुत लाइक बहुत फ्लिमसी टाइप की लगती है भाई, इतना मैंने देखा हुआ रिव्यूज में भाई। तो भाई मैं तो भाई सीरियसली बताऊँ, कहीं से कहीं तक रिकमेंड नहीं करूँगा भाई। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग आउट मानस भाई। पिन योर ओन मैसेज टू मेक एवरीवन हैप्पी, अदर लिंक्स, ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल भाई। Hey everyone, links for laptop in every price category are in the description. Make sure to check them out. Let's pin this message. But check if a software net 8GB RAM, then you might need to go get. भाई बेकार है विक्टर भाई, विक्टर्स तो भाई मैं सीरियसली रिकमेंड नहीं करूँगा। Yeah, definitely Helios, because Helios is using the latest Intel processors. So like, and since it have like better thermal system, like without a doubt, so definitely it is a better choice to go at 1.5. Like if you guys want to go for it, for the like if you want to get better gaming performance. फराज भाई बढ़िया लैपटॉप है वो, पर उसमें शायद 16GB की रैम एक स्टिक में तो भाई फराज भाई ने क्या क्वेश्चन पूछा? भाई देखो चेकआउट कर लेना, का सिंगल चैनल रैम मिल रही है भाई, तो भाई फिर डुअल चैनल के लिए ऑप्ट इन करो भाई, क्योंकि डुअल चैनल इज सो इम्पोर्टेंट। भाई फराज भाई उसका चेक कर लो, इट इज अ गुड चॉइस अंडर 75k भाई अगर आप 75k के बजट पे स्टिक हो, उससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हो, तो भाई प्लीज़ गो फॉर इट भाई, लाइक सीरियसली इट्स अ गुड डिवाइस, बट
भाई अगर आप उससे ज़्यादा खर्च कर सकते हो तो भाई देयर इज एसर प्रेडेटर हेलियोस 300 बिट i7 12 जनरेशन एंड RTX 3060 नहीं RTX 3050 सॉरी i5 12 जनरेशन तो i5 12500H RTX 3060 bro what about F15 i5 but like what is the price of that laptop Anurag Basti bhai पर प्राइस बताओ भाई Valorant yeah I'm playing Valorant is open in the background I seriously don't know whether this game is gonna come on the live stream okay so even bhai like seriously there are a lot of issues and again there is a issue where I can't use game capture to play my game so I will just show you like what is happening so guys like just see so I'm using a display capture so basically what I do is if I will just remove this game capture thing okay so let's just remove this game capture thing now I'm gonna add game capture and use capture a specific window and then I'm just gonna select Valorant as you guys can see so I just did that so right now like if I open the game now my game capture should just start displaying the game on my screen so I just opened it up but you guys can't see the game okay mainly because like you guys can see the game mainly because like right now I'm using the display capture and it is because of that because once I switch back to it again you guys can see like you can see my face again so like my game capture is not even not working with this game and it is mainly because it is something related to it is a MSI afterburner issue मत मानना कभी यार GTA 5 बार पे कर लो भाई मैं करूंगा यस भाई भाई लेकिन भाई सीरियसली बताऊं भाई GTA 5 बहुत बड़ा गेम है स्पेस नहीं है उतना मेरे पास ब्रो it is near 95 like you can go for it bro like seriously I'm not gonna say that it's a bad choice but at 95k you might get ESN 95 5600H and RTX 3060 so 36 going with 3060 will be a bigger jump than going with a better processor so always opt in for a better CPU like for a better GPU than CPU if you're going for a gaming laptop absolutely recommend bro like the RTX 3070 is definitely much more powerful than the RTX 3060 and for 1440p RTX 3070 is it just too good a card. You might be able to play some games even at 4K, but for 1440p RTX 3070 just fits right in. It's a great laptop, Haze Direct bro, but the only issue that the MSI's after sales services are not that great. So if you are someone not from the tier 1 cities or from the metro cities, I won't recommend you to get an MSI laptop. भाई अच्छा तो ब्रो भाई सही बताऊं भाई देख भाई आज भाई उसका क्या इशू है क्योंकि भाई देखो मेरे डिस्कॉर्ड पे भाई कुछ लोग हैं जिन लोगों को भाई इशू फेस हुए हैं उस लैपटॉप के साथ दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट भाई देखो भाई हो सकता है आपके एरिया में भाई लेनोवो की सर्विस अच्छी हो तो भाई अच्छी भी मिल सकती हैं बट भाई मैं आपको देखो अगर आप 1.1 लाख से ऊपर का लैपटॉप ले रहे हो आज ब्रो तो मैं आपको ऐसी कोई चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आपको ऐसा लगे कि भाई यार भाई शुभम भाई ने तो गलत कर दिया इंजीनियर जोन भाई ने तो भाई बताई नहीं मुझे सारी दिक्कत तो दैट्स थिंग भाई गेम कैप्चर नहीं है भाई डिस्प्ले कैप्चर है भाई अभी ना आई आई डोंट नो व्हाट इज द इशू भाई अनरेटेड क्यों लगा रहा था भाई बच गया मैं ओ भाई नहीं 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 थ्रो करना पड़ेगा भाई गालियां पड़ेंगी अब थ्रो करना पड़ेगा सिलेक्ट ही नहीं करूँगा भाई बैप कैम लैपटॉप का ही है भाई भाई ये कहाँ आ गया स्क्रीन पर हाँ हाँ क्या आ गया भाई स्क्रीन पर भाई मैं कुछ आ गया भाई खतरनाक भाई कुछ आ गया क्या भाई कुछ गलत चीज आ गई क्या अरे अनरेटेड बहुत बड़ा गेम है भाई उतना बड़ा गेम थोड़ा खेल पाऊंगा भाई एंड गोना रिकमेंड रिको ब्रो आई एम नॉट गोना रिकमेंड मैं गालियां पड़ने वाली हैं यहाँ पे गालियां देंगे वो लोग देखो I ain't gonna recommend Gigabyte product as well because of the services, man. Because you don't know how good or bad the after services be, and if you are spending 1.5 lakh pro, there is like you shouldn't be like opting in for something that might not be like good for your future.
like Ajay bro, it's a great laptop. I definitely, I personally, I love Legion laptops, MSI laptop, but after sale services भी रहती हैं भाई जरूरी लैपटॉप में हर 6 महीने में आपको एक like Choose your agent. you have to do the after like get 6 to 8 months you have to get your thermal piece change. चलो भाई गालियाँ नहीं पड़ी बच गए. भाई वो बैन करने में भी तो भाई वैसे में तो वो पड़ जाता ना भाई. भाई अगर एग्जिट करने में भी तो बैन लग जाता ना. वार्निंग मिली चलो ठीक है. समटाइम्स तो नहीं करेंगे भाई. आई टोटली अंडरस्टैंड. बस एक बार ही किया भाई. तो भाई hey trial man, how are you brother? I just saw some of your videos on this channel and they are doing really great. Canals. Karen doesn't love canals. that was a super funny video man. And like seriously, even though she didn't loved like Netherlands that much, I got to know much more about Netherlands through that video, and especially since you explained so many things in that video. It's a good enough laptop for that price, Anurag bro. But like if you just want a better gaming laptop, then I think going with at 95k, I think it is much better to go with Acer Nitro 5 5600H and RTX 3060. By look, okay bro, I will just set the settings low. Okay, is it fine now? Let's get started with the deathmatch. Match found. Amitel bro, go for like Amitel bhai, seriously speaking bro, if you are using these things bro, like you should definitely go for a Ryzen based laptop because you need better battery life, and I don't think that Intel is gonna make that much that big a difference. Match. Warm up. So I am already having some network issues and I seriously don't know what was that. Even my ping is higher. I don't know like what is happening with my games today. Razer bro, it's a good enough laptop, but it doesn't have like it have just 95 watt RTX 3060 fasting. The other thing is that like that laptop definitely runs a lot more hotter than the laptop that I'm currently using. Baby bro, तो आपने कौन सा laptop choose किया फिर? Warm up. I usually get around like 320 FPS when I'm not live streaming. But I think with display capture it's good enough performance in my opinion. Ajay bro, like they are much better deals than that man. Even Legion doesn't have the best of the services, after sale services at least that's what I've got to know after a lot. Like there were some people who bought Legion because I recommend Legion to a lot of people, and some of them have faced some after sale service issue with Legion in the recent time, in like last like 3 or 4 months. So I will always say that if you are going for a laptop of that kind, always make sure that you get the best possible after sale services. Shit, I died. No requirement bro, it never reduces the performance, but definitely it might hinder with some other softwares, and might cause some issues, like which is the case with my OBS OBS studios as well. That like from whatever I have searched, like this issue where I'm not able to use display capture, game capture for some of the games, it is mainly because of the MSI Afterburner, because MSI Afterburner there are some issues that are caused by MSI Afterburner, because of which I have to use a display capture and I can't use the game capture.
Harsh bro, when you gonna buy A17 and like which specific model, man? Okay, so he killed him. I killed him. So we are on third rank. Not at all hardly you. You are again spot on, my man, Manas bro. Thank you so much for that, brother. Why it was an easy kill for him. Anurag Basi bro, mainly because देखो भाई seriously बताऊँ भाई, it would have been much easier for like till last year I was thinking that I will definitely buy a laptop because I am a full-time software engineer. I have to travel around. I might have to travel around. I was thinking like I might have to travel around a lot more. But since like I switched my job and I'm like even right now I'm working as a full-time software engineer. But since I have got a permanent work from home in my job, I thought of building a PC and it would have been a lot more easier for me to build a PC. But since I had a YouTube channel, I thought like what's gonna benefit my YouTube channel and what are the resources through which I will be able to help my audience out a lot more. And at that time I think if I will go with a laptop, I might get more attention and a lot more people will try to get in touch with me. So at that time I thought, okay, let's go with a laptop. I'm definitely thinking I'm all in for a PC even right now, and like there are really high chances in next six to 8 months when the RTX 4000 series gonna release. I will build a PC. Like there are like extremely high chances of that. But like since like I already have a YouTube channel and I really want to get connected with my audience, and I really want like I seriously love being on YouTube. I seriously love interacting with you all. I seriously love like when you ask me all these questions, when you want me to help you out with anything, or when there are some certain things that I might not know, and when you tell me those things, it always makes me happy. So I think like since since a lot of people have a PC and they are already doing helping people out like in terms of PC content, I went for this. Hopefully this sorts the things out. I just overstretched the answer a bit. Yeah, man, like definitely Manas bro. But I think I like since the RTX 4000 series is just around the corner, I think like since like right now like if I would have been a normal user, a normal person who wouldn't have been streaming on YouTube, I would have definitely gone for the RTX 3060 without a doubt. Mainly because like it is just it is just a wise choice and it will save you a lot of money because RTX 3060 will definitely help you game brilliantly at 1440p for next 3 to 5 years. Next 3 to 5 years without any issues. But since I will be on YouTube for like even in future, I will try to get the latest component that most of the people haven't reviewed or haven't tested them out. Oh, many congratulations to you, brother. You also have the same name as me, Shobham bhai. Even my name is Shobham. So we both are Shobhams, and although our surnames would definitely be different. Similarly, our laptops are slightly different as well. Yeah, man, like Manas bro. Even that I have had that. So if we will go by that, so RTX 4060 would be somewhere around RTX 3080 label. So I think it will be more than good enough for me. Over the Asus TUF, I mean only big thing about Sutripan Chaudhary bro, bhai, dekho, there is one more thing that you have to keep in mind. Legion laptops run slightly cooler than the Asus TUF A15 laptop, but definitely I seriously think spending 54 like bhai 15 more K for the last year's model is absolutely not worth it, and I think it is much better to get this year's Asus TUF A15 or A17, whatever the laptop you're gonna go for, because it it is outperforming Legion 5 but without a shadow of doubt, like by 10 or 15%.
भाई Sanat Shwane bro, what is the price that you are getting that laptop for, the G17 that you are talking about, and I will then say whether you should go for it or not. The most popular laptop GPU, so you made a good choice with the laptop. Thank you so much for appreciating my choice, man, Rika bro. Thank you so much for that, bro. It really means a lot to me that you are here, and like, and our thinking does match so much. स्पीड क्या है और क्लॉक स्पीड क्या है, क्लॉक स्पीड क्या है और क्लॉक स्पीड कितना डिफरेंट लाता है. क्लॉक स्पीड भाई बेसिकली कि भाई कितने हार्ट्स पे आपका लैपटॉप चल रहा है भाई. लाइक सीपीयू और जीपीयू की अलग अलग रहती हैं भाई. सीपीयू भाई जैसे अभी सीपीयू की भाई देयर इज सम इशू विथ H1 इन्फो बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू कवर इट अप. तो जैसे आप देखते हो ना 3.4 गीगाहर्ट्ज या 4.3 गीगाहर्ट्ज का आपका सीपीयू है, इस क्लॉक स्पीड पर रन करता है. तो मतलब कितना तेज आपका रन कर पा रहा है सीपीयू, कितना तेज प्रोसेसिंग पावर, उस पर भी डिपेंड करता है. तो लाइक क्लॉक स्पीड इन जनरल की भाई किस स्पीड पे वर्क कर रहा है वो समझ सकते हो आप भाई. नो इशूज Shatri Pan bro, thank you so much for asking your question bro. Oh bhai, thank you so much for your kind words Anurag bro, bhai, it really means a lot to me. And seriously speaking, that I have said that again and again that I'm on YouTube mainly because I really want to help you guys out, and if I can do it one way or the other, there is nothing better for me. Good enough laptop bro, it's a good enough laptop. What like but Harsh bro, definitely upgrade the RAM from 8 to 16 GB and you will be able to like get the much better performance, because the 8 GB RAM and A17 is single channel RAM, and you won't be able to get the best possible performance out of that laptop with just 8 GB single channel RAM. $94K, by like a great deal by Sanat bro. You should definitely go for it, or you can go. But it's a great deal by. I seriously think for average gaming estimating, like I think it's a great deal. By. You should definitely go for it, Sanat bro. You are making a right choice. At 94K, it's a good deal because the build quality is really good as well if you compare it to Acer Nitro. I might have recommended you Acer Nitro 5 with 5600H and RTX 3060, but डेफिनेटली भाई सनत भाई जो आप RTX 3050 वाले के साथ जा रहे हो उसमें CPU बेटर है, उसमें भाई 8 कोर का CPU है और भाई उसकी भाई DDR5 रैम है, तो डेफिनेटली इट्स मच बेटर, बिल्ड क्वालिटी बहुत बेटर है भाई. रिको मामिन भाई, आई थिंक आई हैड दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम ऑन माय डिस्कॉर्ड चैनल. तो भाई Rico bro, you have to understand one thing भाई, 6800H is not a competitor of 12500H. It is a competitor of 12700H. But since you're talking about mainly about Warzone, I think 12500H might like come really close to 6800H, the Ryzen processor, like extremely close, mainly because Warzone use as much power as like CPU power as it can, and since Intel laptops can over like 60 watts or even 55 or 60 watts power consumes over 55 or 60 watts power pretty easily, sorry. So like 12500H might come close to 6800H, but I can't say that it can beat 6800H, but definitely the i7 12700H can definitely beat 6800H in any CPU intensive game for sure. बजट है तो एथिकल और गेमिंग के लिए कौन सा बेस्ट ऑफ लैपटॉप रहेगा भाई. देखो भाई टोटली डिपेंड्स ऑन यू भाई बेबी. भाई देखो, मैं एसर नाइट्रो 5 रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन एसर नाइट्रो 5 मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उसका भाई लाइक बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है. थर्मल्स ठीक ठाक है, बस बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है. ठीक है, उसके सिवा भाई Asus TUF A15 जो 5900HX और RTX 3060 वाला आ रहा है, अगर आप भाई लाइक 99K तक जा सकते हो तो वो रिकमेंड कर दूंगा. और नहीं तो फिर भाई जो G17 बताया भाई वो भी अच्छा 3050 के साथ, लेकिन 4000 में अगर आप 95 तक खर्च कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि 4 या 5000 खर्च और करो, 3060 लो भाई. भाई G15 RTX 30 कौन सा वाला बेस एंड भाई ब्रो, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि भाई कौन से लैपटॉप के बारे में आप बात कर रहे हो. सनत भाई नो इश्यूज ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन भाई. भाई नहीं ऐसा नहीं होता है भाई, वो 32 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड हैं भाई. 2 रैम लगा लोगे तो भाई उससे 64 मेगाहर्ट्ज नहीं होता, वो 32 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करती है भाई.
The quiet kit by totally depends on you. Like personally, I like AMD mainly because of their extremely good battery life, and I love Intel mainly because they offer slightly a bit more in gaming when it comes to gaming. Unrated FPS. By Tarun Udar bro, unrated like if I will play unrated game, it will be quite a long game. So hence, I'm just gonna play one more that match Match at the found. lowest possible setting, and then I'm gonna close this game. Go for the RTX by G15. What is the price? They both are at the same price. Adit Kumar Ray bro, go for the hashtag G15. The 3070, even though it have a 3070 from the last year, it doesn't have a mux switch, but the 3070 have 8 GB of 8 GB of VRAM, and I think it have 125 watt of 125 or 115 watt 115 watt RTX 3070. Until last year, there was a huge difference between TUF and Aztec G15's performance, mainly because G15 has higher powered GPUs, but this year they are basically offering the same configurations, so there is not that much of difference. No issues, baby bhai. So Andarna bro, like I'm already showing the FPS, man. Why do you want me to go to armory crate and show you the temperature? Like I just want to get the logic behind it. कबूतर भाई, कबूतर कौन है भाई? अभिषेक भाई, भाई 3060 लो मिनिमम भाई, नकाब नकाब ब्रो भाई। 3050 Ti में 4GB VRAM भाई आज तो ठीक है, लेकिन 1-1.5 साल बाद थोड़े से इशू आ सकते हैं गेमिंग में, अगर आप हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे चाहते हो गेम खेलने। Low guard NL bro, it is good enough, but it is not like the best possible, best CPU ever. It's good enough. लैपटॉप भाई अरविंद भाई, इतना पैसा होता ना मनी को टाइप ब्रो भाई, आज 5-6 लैपटॉप पीछे रखे होते और मैं उन पर सब पे टेस्टिंग कर रहा होता और फिर मैं लैपटॉप गिव अवे कर रहा होता भाई। F15 करके आता है मोटेक ब्रो भाई। A15 मतलब AMD, और F से जो आते हैं उसका मतलब होता है इंटेल। तो अगर आप सर्च करोगे Asus TUF A15 तो यू विल सी कि एक इंटेल के साथ 12 जनरेशन वाला लैपटॉप आता है, वो आप ले सकते हो भाई, अगर आपको इंटेल 12 जनरेशन ही चाहिए टफ के साथ में। MSI आफ्टर बर्नर विशाल भाई। सोने में समझ नहीं पाया भाई, 2 डिफरेंट टेम्परेचर, एक CPU का एक GPU का है भाई। क्राउड सो नेगेटिव। डार्क फिनिक्स ब्रो, लाइक सीरियसली भाई मैं बताऊं भाई, डार्क भाई देखो, personally I have owned a HP Pavilion laptop before I bought Asus TUF A15 2021 last year. HP Pavilion laptops are not the full-fledged gaming laptops. Those are like budget-friendly models, so they don't have the best build quality. Okay, but for the price range that they come in, they are good enough laptops in terms of performance, but they don't have the best possible build quality. Most of the people who are here are trying to buy a laptop in a range of 80 to 1 lakh, 80K to 1 lakh. So in that price range, Pavilion doesn't hold a chance, because the other laptops in that price category are the full-fledged gaming laptops, and they are much better in build quality and even in performance, in thermals and everything. Tarun Odarwar, no. Never buy a thin laptop for gaming. Like the Slim 7 is like extremely thin. It is kind of thin and light laptop, and Slim will definitely have like extreme thermal throttling issue if you want to do hardcore gaming on it. Adit Khajuria bro, Dell G15 doesn't have the best thermals, so if you can manage the thermals, I think it is not a bad choice, but if you can't manage the thermals, then Dell G15 is not that great. Yes, on the bro, so like that thing can reach around that temperature. Even my laptop was reaching around that temperature, Shondra bhai. So you shouldn't be worried about it. Like even like 90 to 94 degrees temperature is not that much, bhai, seriously speaking. Mainly because you know, like when we are gaming, our CPU tries to maximize its power and to give us the best possible performance. भाई आपको 13 लूना
मैं लॉस हुआ था क्या? टेरा लूना क्या है भाई? एक्सटेंशन भाई। By Ox Deep Ox that be which is the laptop that you have? Like, is it the TUF A15 or like it is something different? And it might be because you might be like there might be some thermal throttling issue, because apart from there apart from that I seriously don't see any other issues. Best laptop under 75k, Asus TUF A15 4800H and RTX 3050 with 16GB of RAM. Definitely it's the best laptop. नहीं क्रिप्टो में भाई लॉस एज सच लॉस नहीं हुआ भाई, लाइक एंड इवन द मनी दैट आई हैव स्पेंट इन क्रिप्टो आई एम होल्डिंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म, लाइक for the long term. Like I'm not that worried about what's gonna happen with crypto or not. So like I invest in different things and I usually try to hold them for as long as I can. It's not like if something is going in loss, I will try to just take it away. भाई पल्स बाय मत करना, समन राय ब्रो, पल्स डजंट है एंड अ गुड इनफ लैपटॉप. जस्ट गो फॉर द GP66, दे आर मच बेटर लैपटॉप. 10 kills remaining. GL and like the pulse laptop and worth it. They are like good enough if you are like extremely tight on budget, but like they have a lot more other issues that I got to know about a bit later. Vishal bhai, I can definitely make a video on that, but I seriously don't know like how many people would want to watch it, because there are so many people 5 kills remaining. who have made a video on that, and even I saw some of the videos through which I was able to make it like this. So I think there is a lot of content that is available on the internet, and like if you guys can reach out to me on Discord, I might seriously recommend you some of the videos as well that help me out. But I like definitely if you want, I can make some videos in future for you guys, so that you guys can get the same FPS counter just like me. It's a good enough laptop Chris Gaming bro, but टेम्परेचर थोड़े से हाई जाएंगे. CPU के टेम्परेचर 90 से 95 डिग्री रहेंगे. GPU के टेम्परेचर 80 से 85 डिग्री के बीच में रहेंगे. Apart from that, it is one of the best gaming laptop that you can buy at 1 lakh. In terms of performance, it is just top notch. हाँ भाई, RTX 3060 तो 1,25,000 के ऊपर मिलेगा भाई. बेबी आपने जो बताया ना 95 के तक, अगर RTX 3060 चाहिए तो फिर भाई आप 4000 बजट बढ़ाओ और भाई A15 लोड 5900 HX वाला, इट इज मच बेटर प्राइस. भाई HP पवेलियन ब्रो, भाई आई थिंक थर्मल पेस्ट चेंज कराइए भाई, उसमें थर्मल पेस्ट का इशू पक्का आया होगा भाई, क्योंकि देखो उसमें भाई जो वेंटिलेशन है ना पवेलियन लैपटॉप में उतना अच्छा नहीं होता है. तो आई थिंक इट माइट बी बिकॉज कि आपका लैपटॉप थर्मल थ्रॉटल कर रहा है भाई. Aaj Srivastava bro, like seriously, at this point, since I'm not earning that much, seriously, I can't afford a graphic designer as of this moment. But Adit bro, well, please do DM me on Instagram. I would love to have a chat with you. I would love to know you, and definitely in future, if my channel grows just a bit more, I will definitely seek your help if need to be bro. Like, but as of this point, like seriously, I'm not earning enough from YouTube that I can invest or pay you back. And bro, like seriously, I know that like there is a lot of work that one have to put in as a graphic designer, and like I will do my best to reward you, but like as of this moment I'm not earning enough from YouTube, and like I have to save up to get the other devices as well, and hence I'm not be able to afford a graphic designer. But thank you so much for your kind words bro, and definitely try to connect with me on Discord or on Instagram. I would love to have a chat with you, and if there is something that I can do for you, please do let me know. I will try to help you out as well. So guys, I'm again gonna close this thing. And guys, okay, just let me see one thing. So guys, currently we are at 73 likes. So guys, hopefully if you just joined the live stream, so guys, what I'm gonna just say is that guys, just please make sure that you are hitting that like button, so that our live stream can reach 100 likes as soon as possible. So that is one of the first thing. Apart from that, the other thing that I'm gonna say is like if you have just joined our, like if you are quite new to the channel, if you haven't seen my video, guys, make sure that you are watching my other content as well. And if you think, like I'm not gonna say that you have to subscribe to my channel anyhow,
if you think my channel is worthy enough for your subscription, you can definitely consider subscribing to my channel as well. But it totally depends on you and whether you feel like that my channel is worth it or not. So guys, now we just gonna play some, hopefully Dying Light 2 is available. And guys, I have to enable a slow mode as well. Just wait for a minute. I think I did a mistake when I disabled the slow mode, so I will just enable it. So I just enabled the slow mode. So guys, now after sending one mail message, you have to wait for 20 seconds to send. Shit, shit. I seriously don't want. I never wanted to do that, guys. Like I made a huge mistake. You guys will see the reality of my room now. So this is how I really look. So guys, just wait for a minute. I made a huge mistake. Shit. Okay. So I just removed my. Okay, so it goes like that. And now I have to use a chroma key. Okay, just see the magic. Access Gaming Bro, I seriously don't know. I think he's busy with his study, so he might not be available because of that. So guys, just wait for a minute. Bear with me because I have messed the settings up. So I have to fix them up as well. So this is that. Okay, I might need to use one more chroma key. Ah, shit. And guys, just bear with me for a minute. I'm trying to improve the things. I seriously don't know how did I did that. Okay, so this looks okay. I seriously don't know how to fix this thing now. Shit. Guys, like you seriously have to wait for a minute. Like seriously, I seriously don't know how I messed it up. Like my site is looking like this, so it doesn't look great. So this is this. Okay. Contrast. Let me just turn this on. So like this is what I'm gonna look without my ring light. Uh, Let me just turn it on now. With ring light, I'm looking like this. So okay. Like seriously, how did I mess it up? I seriously don't know. I am gone. Shit.
one more chroma key, hopefully this will make it work. Okay. Shit. I like seriously, I never want to do this thing again. It is absolutely not worth it. How can I remove this thing now? Right. Okay. Ah. Okay. Okay. So guys, we are good to go. I'm just gonna make myself a bit more bigger, and I'm gonna do that. Okay. It looks much better now. Okay. So guys, now I will be able to answer your queries. I'm so sorry for that, for the delay that was just caused. I I need to, yeah, it looks perfectly fine now. I'm just gonna open up Dying Light 2 and then I'm just gonna start replying back to all of you guys because you guys have been waiting for a while now. भाई आप माइनक्राफ्ट RTX वीडियो बनाओ Asus TUF A15 में मैक्स कितना होगा ओल्ड FPS। आदित्य कुमार भाई बिल्कुल भाई ट्राई करते हैं उसको बहुत जल्दी से भाई। मेरे भाई मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे माइनक्राफ्ट खेलने का इसलिए मैं उसको ट्राई आउट नहीं कर पा रहा हूँ। भाई रॉयल एक्स गेमिंग भाई अगर 85 की मैं बेस्ट लैपटॉप चाहिए एसर नाइट भाई गेमिंग के लिए बता रहा हूँ। एसर नाइट्रो 5 12500H रिकमेंडेशन में है बेस्ट लैपटॉप अंडर 80 के में देखो आप जाके एसर नाइट्रो 5 i5 12500H और RTX 3050 वाला लैपटॉप लो। 8 GB रैम के साथ आ रहा है वो 80,000 में। 3,000 रुपये में एक 8 GB की DDR फुल वाली रैम ऑल लेना 16,000 में लाइक 83,000 है वो लैपटॉप भाई। बहुत शानदार लैपटॉप बन जाएगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस भाई। भाई सिद्धांत भाई 80 से 90 के में भाई बेस्ट लैपटॉप अगर मैं बताऊंगा तो जो अभी मैंने रिकमेंड किया भाई हमारे कौन से भाई थे भाई किस भाई को किया था भाई रॉयल भाई को वही करूंगा आपको। एसर नाइट्रो 5 2022 जो कि आता है RTX 3050 के साथ 95 वॉट का RTX 3050 है उस लैपटॉप में। और भाई उस लैपटॉप में एक चीज़ और मतलब उस लैपटॉप अगर आप बाय करते हो और भाई अगर मेरी लिंक से अगर आप बाय करोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प द चैनल आउट एज वेल क्योंकि उसके थ्रू मैं आई विल बी एबल टू बाय मैनी मोर लैपटॉप्स इन फ्यूचर। तो भाई अगर आप वो लैपटॉप बाय करने का सोच रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। बट उसमें क्या है 8 GB की रैम आ रही है लेकिन उसमें आपको भाई लाइक मिनिमम जो मैं रिकमेंड करूँगा यू शुड डेफिनेटली गो फॉर 16 GB रैम उसमें क्योंकि DDR4 रैम मिल रही है। तो आप 16 GB रैम के साथ जाओ उसमें DDR4 डुअल चैनल एंड इट विल परफॉर्म रियली ग्रेट। एंड सक्षम भाई कैसे हो भाई आप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सक्षम भाई। नाइट कोर प्रिंस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ब्रो कैसे हो भाई आप। भाई आकाश भाई 100K के अंदर बेस्ट जो लैपटॉप है वो लैपटॉप है RTX 3060 5900HX Asus TUF A15। CPU GPU के टेम्परेचर थोड़े से हाई रहेंगे लेकिन परफॉर्मेंस में भाई उस लैपटॉप की कोई कमी नहीं है। वो लैपटॉप भाई बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा और आपको मज़ा आ जाएगा भाई उसकी परफॉर्मेंस देख कर। इसको भाई DDR ये 12 करना बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट 11 12। तो भाई इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन और अब कर दे
लेट्स सेव इट और अब हम कंटिन्यू करते हैं कैंपेन को। फुल फेस के मोबाइल बना ले सब भाई। अरे भाई बना के रखे थे भाई सक्षम भाई, लेकिन हट जाता है यार धोखे से यार भाई, क्या बताएं। और उसमें क्या भाई सक्षम भाई एक्चुअली क्या कि मेरा भाई कैमरा भी भाई लैपटॉप का वेब कैम उतना अच्छा भी नहीं है, फुल स्क्रीन अगर कर दूंगा तो भाई थोड़ा पिक्सल सही नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं नहीं उसको फुल स्क्रीन नहीं करता हूँ भाई। भाई बेटर परफॉर्मेंस होगा ऋषभ भाई इजीली। एसन नाइट्रो 5 एसन नाइट्रो RTX 30 कौन सा वाला बताओ आप, ये भी तो बताओ भाई। नॉट रिकमेंडेबल भाई नाइट कोर ब्रो। i9 11 जनरेशन इज just have too much of a power, and I ain't gonna recommend it for gaming, and RTX 3060 is just 105 watts. It's not worth it at 1.25 lakhs. It is much better to go for Asus TUF A15 2022 with 6800H and RTX 3060 140 watt with a mux switch as well. Night core bro. Capture card to not drop performance. Yeah, the quiet kit bro, like I seriously I was about to order the capture card. The only reason I didn't opted for I was not able to get I was not able to get a capture card is that if I'm using a capture card I need to have one more laptop or the desktop to live stream from, so like, and if I doesn't have it, like there is literally nothing that I can do. Like I will not be able to make use of that capture card. Ritesh Kumar bhai, Jai Shri Krishna bhai, thank you so much for joining in bhai. No issues Akash bhai, thank you so much for joining and thank you so much for asking a question bhai. अरे भाई सक्षम भाई क्या बताए इतना पैसों का भाई, कि अभी आप बात करो पर बताएं आपको कहाँ जा रहा है पैसा। भाई इस गेम में भी भाई जो अभी जो एग्जैक्ट इशू आ रहा है इसको ऐसे परफॉर्मेंस थोड़ा सा लॉस हो रहा है, वो है कि भाई इस लैपटॉप में अभी भी भाई लाइक VRAM आप देखोगे ना तो 5.7 GB यूज़ हो रही है, लेकिन गेम कैप्चर के साथ भाई लाइक इट्स गुड इनफ परफॉर्मेंस। और भाई मैं सेटिंग दिखा देता हूँ कौन कौन सी सेटिंग पे हम गेम खेल रहे हैं। फुल स्क्रीन खेल रहे हैं, 1440p खेल रहा है, कोई भी DLSS नहीं है, DLSS अप्लाई कर देते हैं क्वालिटी, और हम लोग हाई सेटिंग्स पे खेल रहे हैं। आई थिंक देयर इज वन मोर ऑप्शन जिसके इसके बाद आई थिंक इट इज़ द मैक्स पॉसिबल सेटिंग, उसके बाद फिर हमारा रे ट्रेसिंग आ जाएगा भाई। पहले तो उसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद फिर देख लेते हैं कि भाई वेरी हाई भी कोई ऑप्शन है या फिर सीधा भाई रे ट्रेसिंग ही लग जाएगा भाई। हाँ भाई देखो मतलब वेरी हाई सेटिंग्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स, और उसके बाद फिर हमारा सीधा रे ट्रेसिंग लग जाएगा भाई। ठीक है, तो अब DLSS अनेबल कर लिया ना मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स पे 1440p पे, तो अराउंड 60 FPS मिल जाना चाहिए अगर उसको भाई लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ तो। क्यों? क्योंकि इसमें VRAM यूसेज मैक्सिमम हो रहा है भाई, उस वजह से भाई। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू यू टू भाई रितेश भाई, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड तेजी राइज ब्रो इवन भाई आपको भी लाइक मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी लाइक आई विश यू अ हैप्पी जन्माष्टमी एज वेल ब्रदर। But baby bro, go for Ryzen 9 bro. Ryzen 9 is much better a choice. I mentioned a 3050 because like if people want a mux switch and RTX 3050, they can definitely go for the Asus the G17 if they want all the RGB in the world. भाई सक्षम भाई हम बिल्कुल बिजी नहीं है भाई, हमें ये लगता है कि आप ज़्यादा बिजी होंगे इसलिए हम आपको परेशान नहीं करते हैं सक्षम भाई। अब आप ऐसी बातें कर रहे हो, तलवारें निकाल ली जाए भाई। अब देखो अब तलवारें निकाल ली जाए और लोगों की पिटाई लग जाए। या ब्रो आई एम अ फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आई वोंट से कंप्यूटर इंजीनियर बट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आई डू like the work related to coding and all. Like definitely the optimization of this game looks a lot better than what it was few months back. At least when it got released, this game plays a lot better. I already played it, Devin bro. You can just go to the like very initial part of the live stream and you can see like how that game performs. But definitely there are certain issues, and Spider-Man, I have already completed that game. That one need to like handle before watching that gameplay, and one of them being the game is not that much optimized if you are sinking through the city. So like even though the game is like
is quite decent. It's not a bad game in any manner because I just simply love how good that game is. But the optimization, especially when we are swinging, BAP swinging through the whole city, the FPS do go down. And you can see that CPU doesn't, either the GPU doesn't get utilized to 99% or the 100%, or the GPU power just fluctuates a lot. कनेक्टिंग अरे भाई क्या मैसेज वापस ले लिया भाई? अरे भैया सक्षम भाई, सब बोलने वाली बातें हैं भाई, यहाँ सब लाइव स्ट्रीम के सामने सबसे बोल रहे हैं कि हम कौन सा बिजी रहते हैं, और भाई ऐसे भाई भाई का पता ही नहीं है भाई है भी कि नहीं है, कहाँ है भाई, किन कामों में लगा हुआ, कोई जानकारी नहीं मिलती है हमें दूर दूर तक भाई। क्वेश्चन था, अगर आप बता सको तो फुल स्टैक डेवलपर जॉब के कौन से स्किल अच्छा है? भाई रितेश भाई देखो, इट टोटली डिपेंड्स कि भाई आपको किस फील्ड में जाना है। देखो पर्सनली इवन आई एम वर्किंग एज अ फुल स्टैक डेवलपर इन माई कंपनी एट दिस पॉइंट। तो भाई आई एम वर्किंग विद जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट एंड जावा in the back end. तो भाई there are like many more technologies that you can work with, but basically भाई it totally depends कि आपको किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट just simply means that you will be like making the full product from starting to the end. You have to just pick and choose the technology that you love, that you find easy. Some people might, oh bhai, I got killed. Some people might find like Python easy if they want to use it, like if they are willing to use it in the back end one way or the other, they might find it a bit easier. बिल्कुल भाई सक्षम भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन भाई। भाई आई एम आदि भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल भी नहीं पता है भाई, मुझे सीरियसली बता रहा हूँ ओवरले बनाने के लिए, क्योंकि लाइक स्पेशली रिलेटेड टू पीसी भाई, मोबाइल गेमिंग का तो बिल्कुल ही नहीं है भाई नॉलेज। इवन लैपटॉप के लिए भी भाई जुगाड़ लगाते रहते हैं हम, यहाँ वहाँ से सर्च वगैरह करते हैं भाई, फिर उसके बाद जाके कुछ मिलता है तो फिर उसको करते हैं भाई। भाई जो 99K वाला है भाई, बिल्कुल भाई बेबी भाई, लेकिन भाई बेबी भाई और जो लोग भी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं उनसे एक मेरी बहुत छोटी सी और एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि गाइस, अगर आप लोग भाई मेरी लाइव स्ट्रीम को देख रहे हो, एंड गाइस आई सीरियसली डोंट वांट यू गाइस टू डोनेट मी थ्रू सुपर चैट्स और एनीथिंग, लाइक सीरियसली आई डोंट like especially since most of you are student and you like your parents are paying for whatever you want. तो भाई मेरी एक सिर्फ आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी लैपटॉप बाय कर रहे हो या कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो, लाइक इट्स नॉट पर्टिकुलरली लैपटॉप या कोई भी चीज़ और भी चीज़ अगर आप बाय कर रहे हो, तो भाई आप लोग जो मेरी एफिलिएट लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, उनके थ्रू आप भाई अमेजोन पे रीडायरेक्ट हो जाया करो, उसके बाद बाय एनीथिंग दैट यू वांट, अमेजोन विल पे मी सम कमीशन फ्रॉम देयर एंड। वो जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है, आपको उसी प्राइस पे मिलेगी अमेजोन से, बट अमेजोन विल पे मी सम मनी फ्रॉम देयर एंड, मेनली बिकॉज आई एम रीडायरेक्टिंग you all to Amazon in order to purchase those things from their website. तो भाई अगर आप ये करोगे तो भाई उससे क्या होगा, लाइक आई विल गेट सम मनी थ्रू यूट्यूब, लाइक Amazon, that I will mostly be using to buy like either new gaming laptops or the new gadgets for the YouTube channel, so that I can either improve my quality or bring much more content for you guys. So that's the only thing that I'm gonna say, because like guys, like seriously speaking, I try to save as much as I can from my end to buy new gadgets and new laptops, and I totally understand that it's not your duty to pay me anything in order to bring all this content, but like affiliate marketing, Amazon affiliate marketing is something that like in which you won't have to pay even a single penny from your end to me, and like it will only be YouTube that will be paying me. So that's why I always request you guys to like help me out through that in that manner, so that you don't have to like take the burden of paying me anything from your end. मुझे अच्छा लगता है भाई रितेश भाई, डेफिनेटली देखो हर चीज में स्कोप है भाई रितेश भाई, सीरियसली बताऊं भाई हर चीज में स्कोप है, चाहे PHP हो या कोई और अदर लैंग्वेज हो, स्विफ्ट हो, गोलैंग हो। बात क्या है भाई कि like you should be willing enough to upskill yourself so much that you are one of the best person like in that particular field, and I can promise you bro कि भाई कई field like even a language like COBOL, which have been like people think it is a dead language and you can't do anything in it. I have seen people get like amazing opportunities through that language as well, mainly because they were really good in it.
it doesn't depend on the language or anything else भाई. Even I am learning through I am learning with time भाई. नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं. तो you should cope up with the changes. You should be able to, like, no matter which field you are in, just try to make yourself the best version of yourself in this field. अरे भाई बेबी भाई थैंक यू सो मच भाई. अगर आपने बोल ही दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई. मैं बेबी भाई. और अगर आप भाई, अगर आपके भाई पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन परचेज नहीं करना है यार भाई, ऑफलाइन ही परचेज करना है, भाई आप ऑफलाइन ही परचेज करो भाई. सीरियसली मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई. देखो आई सीरियसली टोटली अंडरस्टैंड इट, क्योंकि लाइक इट्स योर पेरेंट्स मनी एंड दे शुड बी द वन हु शुड मेक अ डिसीजन वेदर यू शुड buy a laptop online or offline. तो भाई ये should be your parent decision. I totally understand it. But अगर आप online करते हो तो you can help me out of this. Don't play games on. भाई I like seriously बताऊँ भाई, nowadays I hardly get time to play games on PC. So like whenever I play, like since I just have a single laptop right now as of this moment, so I play games on it. I just completed Spider-Man on this laptop. I completed this very game that you're seeing right now on the screen, that is Dying Light 2 on this same laptop. And guys, like whoever is worried about like the 86-degree temperature, guys, just see the core clock speed. It is constantly around 2K mark, so like it's not an issue that the laptop is thermal throttling. The power is constantly around 133 to 140, 129 to 130 watts. So like this laptop is working perfectly fine even at this temperature, and the temperatures are a bit higher than usual, mainly because my ambient temperatures are a bit high. Thank you so much, Ritesh bhai. Thank you so much, Ritesh bhai. Thank you so much for understanding and thank you so much for just saying that, bro. तभी तो पहले ही बोला कि तुम्हारे लिंक पर पैसा डालेंगे. Thank you so much, baby bhai. Thank you so much for that, bhai. Thank you so much for your kind words, bro. Like it really means a lot to me. Without any issue, ईशांक भाई. 37 मैं 3060 पे स्ट्रीम कर रहा हूँ भाई, और आप भाई 3070 की बात करो. 3070 पे तो और मक्खन जैसा होगा भाई. 8GB VRAM के साथ तो और अच्छी स्ट्रीमिंग होगी भाई. स्ट्रीमिंग क्या आपको मेरे कहाँ गया भाई वो. चलो भाई, भाई को निपटा दिया. भाई लड़ना ही है तो आ जाओ भाई, पर लड़ ही लेते हैं भाई. full high settings bro. Yeah भाई, जो maximum settings था without ray tracing पे DL है set to quality भाई. प्रतीक भाई 11800H is extremely powerful CPU भाई. ईशांक भाई, it is like slightly better than 5800H that I had last year, bro. It is a great CPU that you are opting for. Even though it's not not the best, like in terms of battery life, it is not the best CPU, but in terms of performance, it is a great CPU bhai. Which laptop bhai? Laptop of the year bhai. Shondan bro, bro, just turn on the turbo mode and then play the game. You don't need to do anything. Just turn on the turbo mode. You will be able to get the best possible performance. The Quiet Kid bro, like till last year, I think Legion 5 was definitely the best laptop that one can get. And even I'm quite a big fan of Legion 5 Pro laptop. Even this year they are quite great. But I think this year they have like extremely tough competition from the likes of TUF, Asterix, and Acer Predator. Like as of this point, mainly because how good the display is,
in Legion 5 Pro. I think they are still one of the best laptops in the market, but there are definitely some other choices that can definitely beat them. If not in overall quality, they can beat them in terms of performance at least, or in terms of pricing. By MSI Cross, by it is like it is like kind of okay laptop, but it doesn't have a max switch for the price that they are asking for it, and hence like I'm gonna say that like it you should definitely go for a different laptop or make a different choice. Go for 12.4 WH 56, like it's much better to go for 12.4 WH Glow Pro. हैप्पी जन्माष्टमी प्रतीक भाई, आपको भी भाई बहुत बहुत जन्माष्टमी की बधाइयाँ भाई. Just open up MSI after like that Armory Crate Bro, and there will be options like silent, performance, turbo, and Windows mode, and use turbo mode. Anurag Bashi Bro, it should be like it is around 6 hours on normal use. My screen is set to 60 Hz, GPU is off, and brightness set to around 75%. If I bring it to 50%, it is around 7.5 to 8 hours, bro. So guys, I think with this I will be ending my live stream. Let me see for how many hours I have been live streaming. So I have been like live streaming for 2 hours and 5 minutes, guys. So it's been quite a long time now, and guys, we are on 96 likes. So guys, if you haven't hit that like button as of now, even now, guys, please make sure that you are hitting that like button so that we can reach 96 subscribe, like 100 likes as soon as possible. Also guys, if you have just joined the live stream, like if you have just joined the live stream and if you are new to the channel, what I'm gonna say is that guys, please make sure that you are checking my other content as well on my channel. And if you think that yes, my content is worthy enough for your subscription, you guys can subscribe to my channel as well. So it's totally up to you guys whether you will like it or not. अब बेबेक भाई आपने टेम्परेचर चेक किया, अगर टेम्परेचर ज़्यादा आ रहे हैं तो भाई बेबेक भाई मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपके लैपटॉप को थोड़ा सा एलिवेट करो. उसका जो भाई लाइक जो वेंट्स हैं उनको भाई लाइक लैपटॉप को थोड़ा ऊपर कर लो बुक के थ्रू या किसी के थ्रू, जैसे कि नीचे वाले वेंट्स काम कर सकें. तो हो सकता है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा जा रहा हो, उस वजह से भी इशू हो सकता है. लेकिन जो एक और चीज़ है जो लाइक दैट माइट बी कॉजिंग द इशू इज़ दैट कि आपका भाई जो लाइक लैपटॉप बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे उस वजह से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हो. तो उसको थोड़ा चेकआउट करके देखो. कूलिंग पैड पे तो भाई फिर मोस्ट प्रॉब्ली गेम का इशू. दूसरा गेम प्ले करके देखो, उसमें अगर स्टटर हो रहा है तो फिर भाई रिप्लेसमेंट के लिए आई थिंक यू शुड लुक फॉर अ रिप्लेसमेंट, या फिर भाई रिप्लेसमेंट से पहले जस्ट लाइक प्ले मल्टीपल गेम्स भाई, क्योंकि हो सकता है इट माइट लाइक फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट इज डेफिनेटली अ गेम इशू इन माई ओपिनियन. भाई 1440p भाई बहुत सही है भाई रितेश भाई, सीरियसली. Like it is one of the best displays that I have ever used like till now. Just go for it, ईशांग ब्रो. अगर आप भाई सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज का आपको इशू नहीं है ईशांग ब्रो, तो आप चले बिल्कुल डेफिनेटली बाय करो भाई, कोई इशू नहीं. अगर आपको लगता है कि आप आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ कर लोगे भाई, लाइक मैनेज कर लोगे, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट डील दैट यू कैन गेट. Like Andhra Barma bro, like it's quite good, but bro sometimes it get a bit hectic as well, mainly because like although like my project has a full-fledged team, but there are certain things that we have to learn as well, being a full stack developer. So that there are always perks and other things as well. Saurabh Ringtones bro, thank you so much for joining in man. हिंदी में बात कर सकते हैं ना तुषार भाई. देखो मैं इंग्लिश में इसलिए बात करता हूँ भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आई शुड रिप्लाई बैक इन इंग्लिश. भाई अगर आप हिंदी में पूछोगे तो मैं हिंदी में आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, हिंदी आती है बिल्कुल. किंग्स ऑफ किंग्स हेलो ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन भाई, बहुत समय बाद देखा भाई आपको. नहीं ट्रेड किया दोस्त हो भाई, वो भी हो सकता है भाई. उसमें एक काम करो भाई विवेक भाई, उसमें भाई जो एडवांस ग्राफिक्स वाली सेटिंग है उसको भाई लाइक बंद, लाइक उसको ऑफ कर दो सारी की सारी सेटिंग्स को. भाई तुषार भाई कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप पूछे. मैं लाइव स्ट्रीम एंड करने वाला हूँ कि बिकॉज इन सम मिनट्स बिकॉज आई हैव बीन स्ट्रीमिंग फॉर 2 आवर्स. भाई कोई बात नहीं भाई, आप आज आए बहुत अच्छा लगा मुझे भाई. राम भाई गाली देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपके नाम में राम है भाई. हेलो तो हम बोल देंगे भाई, हेलो भाई कैसे हो भाई आप, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए थी. आपके नाम में राम है भाई और उसके बाद ऐसे काम कर रहे हो लाइव स्ट्रीम पे आके. भाई भाई लाइट गेमिंग के लिए और वॉरजोन के लिए
भाई फिर 1 लाख में अगर ले रहा है, फिर गो फॉर भाई, अगर उस प्राइस रेंज में देव करंट लैपटॉप लेना है भाई लाइट गेमिंग के लिए, मेनली फॉर बोर्ड, आई थिंक गोइंग विथ एसर प्रेडेटर हेलियोस 300 10870H जो 97K में मिल जाना चाहिए भाई, RTX 3060 नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है राम भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भाई। बेस्ट लैपटॉप है 70K में भाई Asus TUF A15 जो 75K है भाई, 5000 और बढ़ाओ, वही लैपटॉप सबसे अच्छा है भाई अथर भाई। हाँ भाई बहुत सही भाई, 10 सेकंड का 3D क्लिप के बदले भाई बहुत अच्छे सौदे कर रहे हो। चलो गाइस, आई एम जस्ट गोना एंड द लाइव स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड गाइस Bye, and guys, just one more like to go. Thank you so much everyone who have liked the live stream, and I'm quite sure that you're gonna make it 100 in few minutes. Thank you so much for that. 70K क्या भाई, 75K तक बजट एक्सटेंड करो सर भाई, मेरे डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, उसमें आई हैव मेंशन सम ऑफ द लैपटॉप्स, बेस्ट लैपटॉप्स अंदर लाइक डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स। तो अगर आप 70K के अंदर ही लेना है भाई, 70 के ज़्यादा बजट नहीं कर सकते हो, तो आई थिंक आइडिया पेड गेमिंग लो भाई 5600H वाला और RTX 3050 वाला। अगर बजट बढ़ा सकते हो तो भाई 75K के अराउंड Asus TUF A15 मिल जाएगा 4800H और RTX 3050 वाला, इट इज गुड इनफ लैपटॉप। So guys, I'm just gonna end the live stream, and because I've been live streaming for 2 hours straight, so it's been a quite a long time. Thank you so much for that, and Mahesh bhai, thank you so much for the 100 like man. It really means a lot to me that you guys are trying your best to help me out. Bro BCA है कर रहा हूँ, कोई एडवाइस? अरे बिल्कुल बताएं, कल लाइव स्ट्रीम में फिर आएंगे, फिर क्वेश्चन पूछना, फिर आंसर दे आपका भाई। मेरा है भाई बेबी भाई, उसमें मेंशन है भाई, देखो मैंने एक लैपटॉप के सामने लिखा हुआ है, दिस इज द लैपटॉप दैट आई एम यूजिंग भाई, जो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ओवर 25K, जो ये सिर्फ जो मेरे पास मॉडल है ना, वो सिर्फ क्रोमा पे अवेलेबल है, वो अभी ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लाइक गाइस, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। आई हैव टू टेक सम स्लीप, इवन आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, सो सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, लव यू ऑल।